Good evening, everyone. Welcome to my live stream. What's the time? Okay, good evening, people. Everyone, welcome to the live stream. Welcome to the Northeast India Series Season 2 and the Grand Finale Day 2. Okay, yesterday we had the first match with all the players out here, and we know the overall standing, where the team stands out here. And again, the same thing. At first, I'm going to announce again because we are three casters. Devil Alex is in rest today, and me and JB lady, that is UD7 lady, she is in standby. So if again something goes wrong with my channel again, please do not hate or spread negativity. That's gonna be a torture for the streamer. We try our level best to present everyone, so please, I highly appreciate if you guys understand the situation. So now again, my everything is good seems now, so let me focus on the game. If anything goes wrong with my stream for 1 minute, at least be here and refresh the stream, or if not, then we will ask Jojo or the UD7 lady to go live. To go live, because of the stream delay, dear viewers, it takes 1 to 2 minutes or 3 minutes of time to resume the stream. So for that, I humbly request everyone to be understanding, especially today. Okay, so for now, everyone welcome, and please focus on the match and support your team. This is our day 2 of Northeast India Series Season 2 Grand Finale. So the same teams are performing again now. 65 players in the lobby. We go and open up our description box below. Let's go and check it out. The slot 1, we have the piece in slot 2. We have okay, just let me check it out. I'm just checking the sound. Okay, so the slot 2 we have the DT Sports, slot 3 we have Team X7, 4 we have Team NJC, 5 we have BOROHARI Sports, 5 it's yes, BOROHARI Sports, 6 we have the Mind Sports, 7 only Sports, 8 70 Team 70, 9 Team The Who, 10 we have the GYRO Official, 11 the Raid. Okay, Raid Gaming. 12 we have the Team Exit, 13 we have TNS, 14 Nightmare, 15 ZUCS, and 16 is a Sage Hermes. Okay, so meanwhile हमारा जो है plane path भी आ चुका है all the way from the hospital area going towards the Kamiski Island. We see here the players are now in this very second day of a match. Quite interesting तो होने ही वाला है. जिस प्रकार प्लेन पाथ यहाँ पे शुरुआत हो ही चुका है, कामिस्की आइलैंड की तरफ पे बढ़ते जा रहे हैं, इसी प्रकार आज का इस वाला पहला मैच स्टार्ट हो चुका है. मीनवाइल काफ़ी ज़्यादा टीम्स नॉर्दर्न साइड की तरफ में छलांग मार चुका है, ड्रॉप ले चुका है बहुत ज़्यादा टीम्स नॉर्दर्न साइड, यानी कि जोजोपुल एरिया शूटिंग रेंज अंटिल द जारकी को टारगेट करते हुए ले जा रहे हैं. मीनवाइल बहुत सारे टीम्स पोचिंग की, एंड इन दिस लिटिल जो एक कंपाउंड होता है फेरी पियर एंड प्रीमोक्स एंड सो मेनी, जहाँ पे एक कंपाउंड होता है, यहाँ पे छलान भी ले चुका है. ड्रॉप का अगर हम बात करें टीम गायरो ऑफिशियल्स का फॉर्मर ड्रॉप लोकेशंस, तो है ही टीम क्या बोलता है जोजोपुल. ओके, जोजोपुल कंटेनर इनका फॉर्मर ड्रॉप लोकेशन से इनके आसपास में है. टीम पीस इन स्पॉट्स का प्लेयर इन द सिटी इन द नॉर्दर्न साइड में और भी टीम्स है. मीनवाइल हम दिखा जाए बहुत ज़्यादा टीम्स जो है नॉर्दर्न साइड में छलांग मारते हुए. X7 डिवाइड यहाँ पे खुद के समथिंग हो गया यहाँ पे. X7 डिवाइड ओके, X7 डिवाइड यहाँ पे जो है नॉक हो चुका है. एंड पहला जो प्लेयर्स मैच से बाहर NGC आउटकास्ट का बगी से टीम X7 डिवाइड द पहला player being eliminated from the match. That's gonna be a really unfortunate जो एक था इनके लिए. But पीछे से from team The Who, the Rakes managed to have that one kill, one knock towards team NGC. Pride on the knees. Meanwhile, if I'm not wrong, outcast यहाँ पे आ रहा था. एक जो drop clash की वजह से टीम्स NGC, टीम X7, टीम The Who के बीच में एक जो अर्ली फाइट स्टार्ट हो चुका है. रेक्स की तरफ से NGC आउटकास्ट भी होते हुए नजर आते हुए टीम NGC द पहला टीम जिन्होंने जाते ही
1 फिनिशेस लिया था, बट वही टीम्स यहाँ पे 2 मैन स्टैंडिंग में रहते हुए टीम दहूपू या रिक्स को मिलते हुए 2 फिनिशेस और इन ऑल आउट देयर, जहाँ पे अगर हम दिखा जाए टीम X7 का player Dal James and the Oxygen, they are now in a split situation. We see here the teams. Okay, we have our first circle totally in the northern side, not northern central, northern side of the map. We see here the teams are now in this area. टीम नाइटमेयर 14 यानी कि टॉप 16 में यहाँ पे जितने भी टीम्स है सभी टीम्स चैंपियंस है फॉर मी, बिकॉज दे हैड अ लॉन्ग जर्नी ऑल द वे फ्रॉम द क्वालिफायर राउंड फ्रॉम द फ्रिकिंग रीजनल, यू नो व्हाट आई मीन. आफ्टर वी सी हियर फ्रॉम द टीम नाइटमेयर, one player we see 3 coming up with his second knock towards Team TNS Gaming. I mean, like, not expected. We are having so much of early fights, people. I mean, we see here the second they're going crazy out there. We see here Team Nightmare and the Team TNS Sensi being eliminated from the match. On the other side, we have one and only player from Team TNS. We see here कौन सा टीम या कौन सा प्लेयर मैच से बाहर जाएगा आज का इस वाले सेकेंड डे का पहला मैच. अभी नीचे जब मर्दने से दिखता है. ओके जीन, अब जीन के ऊपर में काफी ज्यादा प्रेशर, काफी ज्यादा यहाँ पे जो है इनके ऊपर में प्रेशर भी क्रिएट करते हुए हम देख रहे हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें जीन अपने टीम्स के लिए रिटालिएशन इकट्ठे करने की पूरी कोशिश करते हुए बाइजन का शॉट टीम नाइटमेयर के ऊपर में दिखाते हुए लेट्स सी विल ही बी एबल टू, और ये पहला टीम मैच से बाहर जाते हुए जाते 1.7 matters a lot. We see here the TNS Gene managed to have the one knock, but इनके ऊपर में pressure, one knock coming from TNS Gene. Now they are being in this situation, the player managed to have the 2 knock and 1 finishes in the name. Now we see here TNS player क्या Gene अपनी टीम के लिए क्या यहाँ पे कुछ savior या miraculously, sadly unfortunately he tried his level best. We see the people out here यहाँ पे जो देखते हैं Team Nightmare which get 3 is now getting revived, but sadly boss का elimination हो चुका है. But Team TNS Gene, that was an impressive performance. All in all, we go in the last area. We have the Team 70 who also playing so consistently in this very last very grand finale of the NEIS. We see here the total 4 players are now in the Yashnaya region. Guys, support your teams. Okay, thank God my video is clear. Okay, X7 player we see in the team 12. This is gonna be the team exit if I'm not wrong. Yes, team exit. They are in the ferry pier and the Primox side. एक ही जगह पे नहीं है. They are in this splitted situation. We see here the team exit and now going for the loots, and we see here the क्या बोलते हैं zone 1600 meter away from the zone. They are looting for it now and not really engaging in a early battle. Okay, team exit in the Primox area. All the best to the team exit as well. But we have the team 5. That's going to be the team BOROHARI spots in the shelter area. Meanwhile, it's in the compound. It's in the circle, I mean. But the teams who are now inside the circle, exactly as of now, it is team Red Gaming in the school apartment. If the circle fall upon them, then this match might be in the favor. Let's see. Okay, only one team's match से बाहर होते हुए, that's gonna be the TNS player only with the 1 point in their name. Meanwhile, now let's see again सबका teams अभी भी जीवित है. हम दिखा जाए टीम DT स्पोर्ट्स का प्लेयर, they are in their own former drop location जॉर्जपुल सिटी. इनके आसपास में है टीम PCN का प्लेयर. जो टीम्स अपना ही जो एक लूट करते जा रहा है इसका पहला मैच में कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है. सबको आराम से गेम खेलना पड़ेगा. ओनली स्पॉट्स का बात करें, दे ऑल आर इन व्हीकल. यहाँ पे जो एक सर्कल के अंदर जाने के प्रयास पोचिंग के इस वाले रेंज में वी हैव X7 टीम. ओनली स्पॉट्स का प्लेयर आ चुका है. इनके बिल्कुल सामने है टीम X7 का प्लेयर जिन्होंने जाते ही एक प्लेयर्स को मैच से बाहर कर दिया था, यानी कि 3 मैन स्टैंडिंग में नाउ खेलते हुए टीम X7 का प्लेयर. ओके, वी सी हियर द टीम ओनली स्पॉट्स लेमिनेटेड अगेन. यहाँ पे जो है इनको एक विजुअल यानी कि इन्फॉर्मेशन मिल चुका है आगे पे है कोई.
ओके, एक 7 प्लेयर डैश बहुत ही अच्छे जो कंपाउंड इन्होंने अपने अपने लिए इकट्ठे करके इन्होंने अपने लिए बन के रखा हुआ था। पर टीम माइंड का प्लेयर पीछे से स्काली एंड यहाँ पे कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी कि एक मिनी बैटल शायद हम दिख सकते हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें टीम 6 यानी कि टीम माइंड। ओके, टीम माइंड स्पोर्ट्स का प्लेयर आगे पे तो जा रहा है, जहाँ पे टीम X7 का प्लेयर वाटर सिटी में टीम माइंड स्पोर्ट्स का प्लेयर आगे पे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पे है टीम ओके सो हमारा जो है पहला एंड द सेकंड सर्कल श्रिंक होने ही वाला है। ओनली मिका स्पोर्ट्स के बिल्कुल सामने है, टीम रेड गेमिंग के बिल्कुल पीछे है ओनली मिका स्क्वाड्स एंड माइंड स्पोर्ट्स। बहुत ज़्यादा टीम्स नाउ रोटेशंस फाइट की अगर हम बात करें टीम पीस इन स्पोर्ट्स एंड टीम टीटी स्पोर्ट्स, जितने भी टीम सर्कल के बाहर में यानी यहाँ पे जो है एक सर्कल इनके फेवर में ना होने की वजह से एक जो फाइट्स यानी कि एक रोटेशन फाइट शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीम स्पोर्ट्स एंड टीम स्पोर्ट्स क्रेटोस ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है नॉक डाउन हो गया था, नहीं बल्कि नॉक हो गया है। फ्लैंक्स का स्प्रे काफ़ी इनके लिए जो अगेंस्ट में चला गया, यानी कि यहाँ पे जो है टीम टीटी स्पोर्ट्स का क्रेटोस का एलिमिनेशन एंड ऑन द साइड टीम पीसीएन स्पोर्ट्स लेवन निकालते हुए वन फिनिशेस अपना नाम साइबरनिक एंड द प्लेयर। एक जो रोटेशन फाइट बोलते हैं हमारा साइबर यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है बाय फ्लैक्स ऑफ वी सी हियर निक गोइंग फॉर द कवर फायर। यहाँ पे जो एक रिवाइव के लिए जाता बट जंगल बॉय पीछे से अगर हम दिखा जाए टीम पीसीएन के पास में अगेन अभी फिलहाल के लिए एक नंबर एडवांटेज। नाउ वी सी हियर द टू टीम्स fighting against each other. Am I having the video problem, guys? ओके सो टीम टीटी स्पोर्ट्स हैव लॉस्ट वन प्लेयर। पीसीएन स्पोर्ट्स को मिल चुका है वन फिनिशेस ऑलरेडी। आगे पे अगर हम दिखा जाए बहुत सारे टीम्स पीछे से हेर्म्स का प्लेयर जो अभी तक फाइट में शामिल नहीं हुआ था, जहां पे अगर हम बात करें टीम हेर्म्स आगे पे शूटिंग रेंज की तरफ से आगे पे बढ़ते जा रहे हैं। इनके पीछे आगे पे है टीम टीटी स्पोर्ट्स का प्लेयर। नाउ लेट्स सी क्या इस वाले रोटेशन फाइट में अगेन क्या टीम्स अपने लिए वही कर पाएगा। ओके सो वी सी हियर इन द शूटिंग रेंज एरिया ऑन द साइड वी हैव बहुत सारे टीम्स, मात्र एक टीम्स का एलिमिनेशन हुआ है अभी तक। ओके वी सी हियर द टीम्स नाउ ओनली बोलने से ओनली स्पोर्ट्स प्लेयर सैम 999 की तरफ से एक शॉट देखने को मिल गया था टुवर्ड्स दिस एरिया, जहां पे है टीम 14 यानी कि नाइटमेयर का प्लेयर। ओके सो टीम नाइटमेयर एंड टीम ओनली स्पॉट्स के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो चुका है इन दिस हिली रीजन जो चर्च एरिया है। वी सी हियर इन द पोचिंग की एरिया हमारा जो सर्कल अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल क्या बोलते हैं सेंट्रल रीजन में है मौजूद। ओके सैम 999 एक ओपन पॉइंट निकाला था, लेकिन यहाँ पे जो है आगे स्लैम ही नहीं किया क्योंकि दे हैव देयर ब्यूटीफुल जो कंपाउंड होल्ड करके बैठा, दे रियली वांट टू हैव द कंट्रोल ओवर द पोचिंग की। ओके सो गाइस वी सी हियर द सर्कल ने एक और जो शिफ्ट ले लिया है, दैट्स गोना बी क्या बोलते हैं ऑल द वे फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड में था सर्कल ने यहाँ पे जो है मिलता है, यानी कि एक काइंड ऑफ ईस्टर्न साइड पे सर्कल शिफ्टिंग होके जा रहा है। अभी भी जो सर्कल के बाहर में है टीम पीस इन स्पॉट्स का अभी तक इन्होंने एक भी प्लेयर्स नहीं गंवाया है, लेकिन यहाँ पे जो है टीम्स को आगे निकलना पड़ेगा 940 मीटर यानी कि 940 मीटर सर्कल के अंदर में जाने वाला ये वाले टीम से जो नाउ लेट्स सी इनके पीछे और भी बहुत सारे टीम्स है। माइंड स्पोर्ट्स के प्लेयर फाइट में शामिल होते हुए एक्स ZUCS का नॉट डर्टी प्लेयर, ओके इट्स अ नॉट डर्टी प्लेयर यहाँ पे पिकअप हो चुका था, बट माइंड लॉन्स्टर की तरफ से और भी एक शानदार नॉक देखने को मिलती हुई टीम माइंड स्पोर्ट्स फाइट में शामिल हो रहा था, यानी कि जो एक टीम से काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो फाइट में यहाँ पे रॉजर किल्स का फाइट देखने को मिल रहा था। इस एरिया फ्लेम गॉट
यहाँ पे जहाँ पे है लॉबस्टर वहीं पे जा रहा है। सो 1v1 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेट्स गो अप एंड चेक इट आउट, फाइट बिटवीन टीम एक्स ZUCS एंड द टीम माइंड स्पोर्ट्स। नाउ लेट्स सी कौन सा टीम जाएगा टॉप 14 के अंदर में या कौन सा टीम रह जाएगा इधर ही। माइंड लॉबस्टर यहाँ पे जो है एक्स ZUCS 17 को पिकअप कर दिया है, जहाँ पे नॉट डॉटी को रिवाइवल दे के भी आगे भी निकल चुका है। नाउ हैविंग द पोजीशन ऑन द साइड, एक फाइट्स देखने को मिल जाएगा बिटवीन दीज माइंड स्पोर्ट्स एंड द टीम एक्स ZUCS। आउट हियर वी सी हियर द 3v4 सिचुएशंस बिटवीन दीज टू टीम्स। ये जो पोजीशन निकालना होता है या मतलब टॉप निकालना होता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि टीम्स के लिए यहाँ पे कंपाउंड्स ढूंढना यानी कि यहाँ पे फाइट्स निकालना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि द टीम्स यहाँ पे जो है भर भर के टीम्स के ऊपर में क्या हुआ, फिक्स द स्ट्रीम अच्छा ही तो है ना स्ट्रीम। ओके सो गाइस स्ट्रीम इज ओके, समटाइम्स अंदर होगा ये, दिस इज VPN। ओके सो टीम 15 एक्स ZUCS प्लेयर जिन्होंने आई थिंक यहाँ पे टेबल को टॉप करके रखा हुआ था, बट आज के इस वाले दिन में क्या टीम एक्स ZUCS का प्लेयर उसी हिसाब से अपना जो है कंसिस्टेंट रख पाएगा। बहुत सारी टीम्स आगे पे आ चुका है। रोजक एक जो कंपाउंड यानी कि सर्कल के अंदर में होने के कारण बहुत ही ज़्यादा टीम सर्कल के अंदर में आ चुका है। वी सी हियर यहाँ पे 99% टीम्स in the circle except team PCR. Now they are making a very unique and a long rotations all the way from the 7 area. We see here people okay जो टीम्स अभी तक फाइट में शामिल नहीं हुआ था, बहुत सारे टीम्स फाइट में अभी तक शामिल नहीं हुआ था। We see here टीम GYRO ऑफिशियल्स का प्लेयर, टीम क्या नाम है, टीम बोरो क्या बोलता है, बोरोहारी स्पोर्ट्स का प्लेयर, टीम 7 का प्लेयर, टीम GYRO का अगर हम बात करें टीम एक्सिट, बहुत सारे टीम्स फाइट में अभी तक शामिल नहीं हुआ था। सो फाइट इज येट टू बिगिन। वी सी हियर इन द सेकंड सर्कल हमारा जो है थर्ड सर्कल बन चुका है। टीम ओले स्पोर्ट्स एंड टीम GYRO के बीच में एक बैटल दिखना बाकी, जहाँ पे दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आगे जाने के लिए पोजीशन पॉइंट निकालना और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर हम दिखा जाए टीम GYRO करियो के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा शॉट्स भी इनिशिएट होते हुए बाय टीम ओले स्पोर्ट्स नॉट वांटिंग टू बी इन दिस फाइट। यहाँ पे जो एक फाइट्स को इग्नोर करना पसंद करते हुए टीम GYRO स्पोर्ट्स का प्लेयर यहाँ से अपना पोजीशन बनाते हुए वी सी हियर यहाँ पे जो एक हाइट का एडवांटेज है टीम ओनली स्पोर्ट्स के आगे पे देखते हुए, जहाँ पे दोनों ही टीम्स पीछे से है टीम माइंड स्पोर्ट्स, यानी कि यहाँ पे जो एक 3 टीम्स इन द सेम रीजन, यहाँ पे जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से वी सी हियर फ्रॉम द ड्रोन व्यू, वन साइड वी हैव द टीम माइंड स्पोर्ट्स, ऑन दिस साइड वी हैव द ओनली स्पोर्ट्स, बट टीम GYRO ऑफिशियल्स नाउ टेकिंग देयर फॉल बैक फ्रॉम दिस एरिया। ओके ये भी अच्छा है। टीम एनजेसी का अगर हम बात करें, बोब एंड कॉफिन अभी तक यहाँ पे जो है सरवाइव करके रखा हुआ है अपने टीम्स के, इनके बिल्कुल सामने है टीम से HERMES का प्लेयर। सो गाइस यहाँ पे जो है फाइट में शामिल तो होना ही होना है, फाइट में शामिल तो होना ही होना है। ओके टीम एनजीसी एंड वी हैव द बोब एंड द कॉफिन अपने टीम्स के लिए यहाँ पे जो है टॉप 15 तक आ चुका है, बट टीम 12 यानी कि सेट HERMES को मिल चुका है एक इन्फॉर्मेशन आगे पे कोई पे है। फिलहाल के लिए टीम 12 यानी कि टीम एग्जिट का प्लेयर, सॉरी दिस इज टीम एग्जिट, जो टीम्स अभी तक फाइट में शामिल नहीं हुआ था, पूरी तरीके से लूट्स, अच्छे खासे लूट्स लेके यहाँ पे दे आर सो रेडी फॉर द फाइट्स फॉर द लास्ट फाइट। नाउ वी सी हियर टीम एग्जिट का प्लेयर क्या इस वाले मैच में अपने फैंस के लिए क्या कुछ कर पाएगा, यानी कि बहुत ही एक्सपेक्टेशंस है टीम एग्जिट की तरफ से उनके फैन के लिए। ओके सेकंड सर्कल हमारा हो चुका है, थर्ड सर्कल होना ही बाकी है और भी ज़्यादा जो एक केओटिक माहौल, यानी कि हमारा जो बहुत ही गंदा वाला जो एक महाभारत होता है, नट गंदा वाला रेड गेम यहाँ पे जो है फाइट में शामिल होते हुए अगेंस्ट टीम 7 डॉक्टर एक्स जैसा प्लेयर अपने टीम्स के लिए जो एक फ्रैगर होता है, इतने ज़्यादा जो टीम्स यानी कि डॉक्टर एक्स 7 अपना टीम्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती इस वाले मैच में। वी सी हियर टीम 5 यानी कि बोरोहारी स्पोर्ट्स आगे आते एक जो स्लैमिंग यानी कि एक जो रश करते हुए मैं देख रही हूँ, जहाँ पे सेपोई मिकी की तरफ से एक मोलोटॉप्स एंड क्रीज क्रॉस जो यूटिलिटीज का यूसेज फाइट्स देखने को मिल रहा था इन दिस मिनी बैटल। क्या टीम 7 का प्लेयर अगेंस्ट टीम 5 क्या मैदान में उतर पाएगा? यहाँ पे जो एक रिटालिएशंस दिखते हुए टीम 8 की तरफ से 7 प्लेयर यानी कि जिनके पास में पिचेस स्कैमर यहाँ पे जो है पिकअप हो चुके 7 की वो चीज का ब्यूटीफुल ये जो एक क्या बोलते हैं कवोफाया पिचेस
सिपाही मिकी, वी सी हियर डॉक्टर एक्स यहाँ पे जो है रिवाइव होके भी आगे जाके भी यहाँ पे जो नॉक निकालते हुए, वी सी हियर द मल्टीपल फाइट्स गोइंग ऑन दिस एरिया. टीम रेड प्लेयर डाउन विद द one man standing out there. We see the one and only player from team 5. Sorry, this is BOROHARI Sports. We see the Nor Glen, and that's going to be the end for team BOROHARI Sports at top 15 by team 70 player. We see here without losing a single player, they managed to be a top 14 with the 4 finishes. What a beautiful gameplay and intense. Wow. Okay, so we see here multiple fights. बोलने से द सर्कल ने एक और भी बड़ा सा जो हार्ड शिफ्ट ले लिया है टुवर्ड्स द फार्म एरिया 70 का, जहाँ पे फाइट हो रहा था. सिर्फ हेर्म्स का प्लेयर उधर ही आ चुका है, जहाँ पे है टीम एग्जिट का प्लेयर. यहाँ पे जो फार्म में इनके पास में बहुत ही अच्छा सा कंपाउंड है. ओनली मी की तरफ से एक शॉट्स भी देखने को मिल गया है टुवर्ड्स द क्या है टीम माइंड स्पॉट्स. ओके, ओनली स्पॉट्स का बात करें बहुत ही अच्छी तरीके से 78 के ओजीएस की तरफ से डीटी साइपर नॉक एंड फिनिश हो चुका है ऑन दिस साइड. ओके, यहाँ पे पोजीशन पॉइंट निकालना, कंपाउंड निकालना उतना आसान नहीं होता है. 70 का प्लेयर की तरफ से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम भी देखने को मिलते हुए. X7 का प्लेयर इसी वाले रीजन में मौजूद है. ओके, लेट्स गो एंड चेक इट आउट द टीम्स. बहुत सारी टीम्स जो है अभी तक फाइट को अवॉइड करके आगे बढ़ते जा रहा था. टीम नाइटमेयर के अगेंस्ट में आगे पे है टीम डीटी स्पॉट्स का प्लेयर. ओके, सो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग यहाँ पे जो है डीटी स्पॉट्स का प्लेयर का जो आज का इस वाले गेम अच्छा नहीं गया, इनका फेवर भी नहीं गया. वी सी हियर जंगल बॉय एंड द नीक, द ओनली 2 प्लेयर सर्वाइविंग हियर फॉर द टीम्स. नाउ लेट्स सी 70 प्लेयर इन फायर. व्हाट पीसी एंड लिमिन यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है बाय टीम 70. वन मोर टाइम एजी एंड द प्लेयर जिनके पास में है 5 फिनिशेस एट टॉप 14 इन द थर्ड सर्कल. वी आर नाउ हैविंग द 47 प्लेयर लाइव स्टे ऑन द साइड. टीम ओनली स्पॉट्स नॉट स्टॉपेबल गेम प्ले भी चलते हुए. ओके, पीस एंड स्पॉट्स ओनली का बात करें अगर हम यहाँ पे जो 7 प्लेयर अगेन ये जो नॉक पे नॉक निकालते जा रहे हैं अगेंस्ट टीम माइंड स्पॉट्स का बचे हुए 1+ काली का एक ब्रूटल एलिमिनेशन देखने को मिलती हुई है बाय टीम ओनली स्पॉट्स. एंड दैट्स गोना बी आई थिंक यहाँ पे जो है द एंड फॉर टीम. समथिंग हैपेंड आउट देयर. 70 से पॉइंट मिकी यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है. 70 डॉक्टर एक्स और भी एक बहुत ही इंटेंस बैटल बिटवीन 70 एंड सो मेनी प्लेयर्स आउट देयर. वी सी हियर एक्स ZUCS कूल एंड नॉट डॉर्टी and the player Flip got still surviving. PCN ने 8 players को गवा चुके हैं in this area. इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम जो चल रहा था, जहाँ पे अगर हम दिखा जाए टीम 8 का प्लेयर डॉक्टर एक्स बच के भी इतना ज़्यादा पहरा क्या बोलते ब्यूटीफुल गेम प्ले, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो है अपने टीम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा दिखाते हुए टीम 70 का प्लेयर डॉक्टर एक्स. ओके, वी सी हियर आगे का जो प्लेयर PCN एंड पीछे से रेड गेमिंग एक्स ZUCS का प्लेयर भी इसी वाले एरिया में मौजूद है. वी सी द शेल्टर एरिया आर नाउ गोइंग क्रेजी. ओके, 70 बोलने से PCN चीफ की तरफ से एक और शानदार नॉक बनी रहता है. 7 पर मिकी ऑन द मीनवाइल यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस बैटल. 70 का प्लेयर नाउ इन बिग ट्रबल. वी सी हियर द सैंडविच सिचुएशन. डॉक्टर एक्स के ऊपर में शॉट पे शॉट बाय PCN chiefly out there. ओके, सो गाइस यहाँ पे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक सर्कल फाइट देखने को मिलती हुई बाय PCN एंड टीम 70. इसके सामने बहुत ज़्यादा टीम्स है. टीम्स एक्स ZUCS काफी ज्यादा टीम्स इसी वाले सेम रीजन में देखने को मिलती हुई. रेड गेमिंग प्लेयर नाउ टेकिंग द फॉल बैक. टीम एनजीसी का बात करें, दे आर स्टिल आउटसाइड द सर्कल. एक जो बैकफुट गेम प्ले, टीम एग्जिट बिल्कुल सर्कल के अंदर में है. वहीं पे अगर हम दिखा जाए टीम ओनली का जो टीम से टीम गायरो एंड पीछे से टीम X7, टीम डीटी स्पॉट्स एंड टीम रेड गेमिंग, टीम X7 टीम, बहुत सारी टीम जो है मैच के बाहर में है. आई रियली डोंट नो यहाँ पे इतने ज्यादा टीम्स सर्कल के बाहर में. टीम द हु एक बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को लोकेट करके बैठा हुआ था इस वाले फार्म एरिया में, जिनके लिए सर्कल फेवर में है फिलहाल के लिए. नाउ दे कैन कैपिटलाइज द सिचुएशन, क्योंकि इतने ज़्यादा जो अच्छे खासे जो एक सर्कल रोटेशंस में इनको शायद मिल भी सकते हैं बहुत ही ज़्यादा किल्स. वी नाउ सी टीम हु के तरफ से कोई भी फाइट्स नहीं देखने को मिल रहा था. बट इनकेस यहाँ पे जो अगर हम दिखा जाए टीम से हेर्म्स का जो प्लेयर्स है सर्कल के अंदर में जाते जाते इन्होंने एक फिनिशेस निकालते जा रहे हैं. बट सर्कल रोटेशंस का अगर हम बात करें देरी ना हो जाए, टीम PCN स्पीडी हु एंड द प्लेयर स्टिल सर्कल के बाहर में फाइट्स निकालते हुए. टीम एक्सिट स्प्रे गॉड की तरफ से ब्यूटीफुल स्प्रे बाय स्पीडी हु. वन मोर टाइम टीम 70 का प्लेयर के में शॉट्स देखने को मिल गया है बाय टीम PCN इज गेटिंग शॉट फ्रॉम एवरीवेयर एज वेल. टीम 70 का अगर हम बात करें डॉक्टर एक्स यहाँ पे जो है एक आसान रिवाइवल तो हो ही जाएगा. मीनवाइल टॉप 14 में यहाँ पे इतने इंटेंस जो बैटल चलते हुए टीम रेड गेमिंग का फाइनली यहाँ पे जो है फाइट देखने को मिल रहा था. सांगना एंड द प्लेयर, वाओ, इतने ज़्यादा टीम्स टॉप यानी कि जो है 4th सर्कल में अभी तक भी जीवित है.
ओके टीएनएस का टीम जो है मैच से बाहर हो चुका है। टीम बोरोहारी स्पोर्ट्स, टीम माइंड स्पोर्ट्स, यानी कि 3 टीम्स मैच से बाहर हो चुका है। आउट नंबर टीम्स अभी भी बहुत ही ज़्यादा है देखने को। अगर हम दिखा जाए टीम एग्जिट का अगर हम बात करें, इनके पास में है 0 फिनिशेस, इनके पास में अभी तक कोई नहीं, लेकिन दे हैव एडवांटेज, दे हैव बेनिफिट, दे हैव द नंबर बेनिफिट्स यार। अगर हम दिखा जाए यहाँ पे टीम एग्जिट, आगे भी टीम गायरो ऑफिशियल्स यानी कि टीम गायरो का प्लेयर्स का अभी तक फाइट में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन डीटी ने यहाँ पे जो है और भी एक बार नॉक देखने को मिलते हुए। ओके ये जो फाइट था जंगल वो यहाँ पे जो है सोलो प्लेयर अपने टीम्स के 0 फिनिशेस के साथ में पीसीएन स्पोर्ट्स की तरफ से और भी एक शानदार नॉक टुवर्ड्स टीम रेड का यहाँ पे जो है प्लेयर सांगा पिकअप हो गया था। टीम पीसीएन स्पोर्ट्स मैच में जो इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, एक्स7 का प्लेयर यहाँ से आगे जाने की पूरी प्रयास। आउट इन द ब्लू वी सी हियर पीसीएन चीफली का ब्यूटीफुल नेट रेड पीओप यहाँ पे जो है पिकअप होते हुए मीनवाइल लीविंग एंड द स्पीड हु आउट फ्रॉम दैट ब्लू एरिया। क्या बात है यार, सिक्स हेर्म्स का प्लेयर द 4 यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है। टीम एक्स7 का प्लेयर अभी तक भी फाइट में शामिल नहीं हुआ था, बट पीछे से ब्लू सर्कल से यहाँ पे जो अभी तक कुछ कर रहा था, आई मीन लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक देयर पोजीशन। रेड गेमिंग का प्लेयर अगर हम बात करें, ओनली सैम एंड जिसे बो को पिकअप करते हुए ऑन दिस साइड एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट और भी देखने को मिलते हुए, मल्टीपल फाइट्स गोइंग ऑन ओनली सैम की तरफ से देखने को मिलते हुए। एक नॉक देखने को मिलता है एनजीसी प्लेयर यहाँ पे जो है एक आउट नंबर हो चुका है। मीनवाइल एनजीसी बो एंड एनजीसी का एलिमिनेशन टॉप 13 में देखने को मिलते हुए बाय टीम ओनली स्पोर्ट्स। X7 ZUCS not dirty getting shots out there. Team GYRO officials playing. यहाँ पे जो है एक मिनी बैटल देखने को मिलते हुए। रेड गेमिंग का प्लेयर मैच से बाहर हो चुका है। टीम दहू यानी कि एक जो मल्टीपल फाइट देखने को मिल गया था टीम गायरो को, फाइनली डेक्स्टर को मिलते हुए 1 फिनिशेस। पीसीएन प्लेयर अगेन फाइट में शामिल 2 प्लेयर्स के साथ में भी काफी इंटरेस्टिंग फाइट जो देखने को मिल गया था बाई टीम पीसीएन स्पॉन्सर आउट देयर टुवर्ड्स टीम रेड गेमिंग। ये जो रफ्तार यानी कि मैच का जो रफ्तार देखने को मिल गया था, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आगे है। जो टीम रेड गेमिंग आउट है वी सी हियर टीम पीसीएन का प्लेयर, आई थिंक यहाँ पे जो है काफी इंटरेस्टिंग स्पीडी होन यहाँ पे ये जो स्लैम इनके कतर फेवर में गया था, बट यहाँ पे हाइट के एडवांटेज ना होने की वजह से टीम पीसीएन मैनेज टू वाइप टीम रेड गेमिंग वन मोर टाइम। लेट्स गो ओवर टू द एरिया टीम एग्जिट। Still with a 4-man standing, excellent player. We still have the oxygen and the James on the knees. Meanwhile, team Nightmare की तरफ से यहाँ पे एक नॉक देखने को मिल गया था। Nightmare player still surviving. Wage kid यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है in the farm area. We have so many teams now fighting for the chicken dinner. People now down with the 10 teams and the 25 players still in the lobby. We see here team GYRO with the 4-man standing, team Exit and team Sage Herms and team DT Sports. We have the team Exit Melvin with the beautiful grenades towards team Nightmare. We see here exclam शायद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। One more Molotovs towards team 14. That's going to be the Exit Melvin we see here and बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिलती हुए। ओके सो फिफ्थ सर्कल जो है हमारा फॉर्म हो चुका है। टीम एग्जिट का बॉस की तरफ से यहाँ पे और भी एक शानदार नॉक देखने को मिलते हुए। मीनवाइल टीम एग्जिट का प्लेयर दोनों तरीके से काफी ज्यादा अच्छे खासे जो गेम प्ले निकालते आगे भी जा रहा था। टीम गायरो का डेक्स्टर निकालते हुए अपने टीम्स के लिए 2 फिनिशेस इन्होंने अपने टीम्स के लिए निकाल चुका है। टीम एग्जिट इन फायर, टीम गायरो फाइनली जो टीम्स अर्ली फाइट में एंगेज नहीं हुआ था, लास्टली जो लास्ट सर्कल में पूरा ही यहाँ पे जो इनका गेम प्ले देखने को मिलते हुए। ओके टीम हु मैच से बाहर हो चुका है। मल्टीपल फाइट जो हुआ था, प्लीज यहाँ पे जो एक मल्टीपल फाइट्स आई ट्राई टू कवर, यहाँ पे सब कवर नहीं होता है। ZUCS का एलिमिनेशंस बाय टीम गायरो वन मोर टाइम। Career and the player with a beautiful comeback. We see here again with the 4-man standing out here. Team mind-blowing performance. Let's see people. Team GYRO को निकालना पड़ेगा जोन के आगे, but they still have that manpower. We see here team 7 players still with 3 men standing at top 6 with the 6 finishes. We have team Exit at top 6 with the 7 finishes. We have the X7 player inside the leader shack out there, have nowhere to go, but still the zone in the favor. We have the player James and the Oxygen at top 6 with the 0 finishes. We still have so many teams. Okay, we have the 6 teams. Oh my god. बॉस 7 now moving forward. ओके यहाँ पे एक स्लैमिंग देखने को मिल रहा था। 1v2 का यहाँ पे निकल कर अपने टीम्स के बैरल अपने हाथों में लेके आगे में जाते हुए एक प्रेशर क्रिएट करके जा रहे हैं बाय टीम एक्सिट एक्स जेम्स। यहाँ पे जो है अंदर रहते टीम X7
का जेम्स निकालते हुए अपने टीम से जो एक फ्री किल मिला। यहाँ पे जो टीम्स यानी कि आगे का टीम एग्जिट यहाँ पे एक जो स्लैमिंग करने के लिए आया था, यहाँ पे रॉन्ग टर्न देखने को मिल गया, रॉन्ग टर्न हो गया इनके लिए। X7 निकालते हुए वन फिनिशेस, एक जो इंटेंस यहाँ पे जो फाइट्स देखने को मिल रहा था बिटवीन दिस टीम्स आउट देयर। वी सी हियर द टीम गायरो रेकर की तरफ से एक ब्यूटीफुल नॉक टुवर्ड्स टीम सेशंस ऑन द मीनवाइल ओनली सैम निकालते हुए एक ब्यूटीफुल नॉक टुवर्ड्स टीम एग्जिट का एलिमिनेशन एंड सेज हेर्म्स का एलिमिनेशंस मैच से बाहर होते हुए टीम X7 एंड टीम PCN एंड टीम OE स्पोर्ट्स। वी सी दिस साइड टीम गायरो ऑफिशियल्स विद अ 4-man स्टैंडिंग स्टिल। जो टीम्स फाइट में यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से टिकते हुए चिफली के ऊपर में काफी ज्यादा किलो करते हुए ऑक्सीजन एस काफी कोशिश करते जा रहे, रिफ्लेक्स करते ओपी बोलते हैं यार। यहाँ पे जो है सैम 999 अपना बगी को लेकर आगे जाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे जो है 11 टीम्स के साथ में यहाँ पे जो है टीम्स। लेट्स सी नाउ पीपल कौन सा टीम्स को मिलेगा चिकन डिनर। टीम पीस एंड स्पोर्ट्स चिफली एंड स्पीडी हो 8 फिनिशेस इन्होंने अपना नाम निकाल के रखा हुआ। आज के इस वाले सेकेंड डे का पहला मैच इन इस प्रकार का जो रफ्तार यानी कि द हाइट ऑफ द कंपटीशन पीपल, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस जो एक बैटल चलते हुए टीम गायरो ऑफिशियल्स ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक जो कमबैक दिखा के यहाँ पे सबको इंप्रेस कर रहा। मीनवाइल टॉप 4 में चारों जीवित एक जो है शॉट्स लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। X7 जेम्स स्पीडी यहाँ पे जो है पिकअप होते हुए बाय X7, काबिल तारीफ यहाँ पे जो है कुडोज टू द प्लेयर फ्रॉम टीम X7 एज वेल। जेम्स यहाँ पे जो है इतने छोटे जगह थे इनके लिए बचने के लिए, मात्र one little shack out there, they managed to survive still at top 4. We see here the team only Gyro Dexter in fire one more time. X7 oxygen यहाँ पे जो है पिकअप होते हुए by team the player Gyro Dexter out there. We see here player, come on, let's go for the like as well if you are enjoying the stream. Okay, X7 in big trouble. We see here the zone shrinking, not in the favor of team X7 on the side. We see here the team Gyro Ursula यहाँ पे जो है एक grenades towards team only spots की तरफ में देखने को मिलते हुए। Now let's see people, कौन सा teams आज के इस वाले दिन में मैच में players ओवरऑल स्टैंडिंग को यहाँ पे जो है उलट पुलट करने वाला है। टीम गायरो ऑफिशियल्स आगे में है, टीम PCN इन यहाँ पे जो है बट उर्सुला वन प्लेयर PCN चिफली के हाथों से पिकअप होते हुए। मीनवाइल इन दिस एरिया डाउन विद द टॉप 3। आज का हमारा जो है पहला टॉप 3 आ चुका है। ओके मीनवाइल टीम ओनली स्पोर्ट्स एंड टीम PCN एंड टीम गायरो ऑफिशियल्स के बीच में फाइट्स। नाउ लेट्स सी 3 टीम्स के बीच में जो चिकन डिनर लेने वाला है, कौन सा टीम्स को मिलेगा चिकन डिनर। Okay, only sports team PCN, the one and only player Chiefly and the player Gyro officials. Now let's see 1 versus 3 versus 4 ये निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे जो है चिफली अपने टीम्स के लिए काफ़ी यहाँ पे कोशिश करते जा रहा था। बट इस वाले हालात में, इस वाले टाइम में डेक्स यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है बाई टीम ओनली स्पोर्ट्स आउट देयर। लेमन यहाँ पे जो पिकअप हो चुका है, सैम पिकअप होते हुए बाई ओनली डेस्टिन यहाँ पे जो एक नॉक जो मिल गया था, कुछ भी हो सकता है। मीनवाइल यहाँ पे इस वाले हाइट में आके चिकन डिनर के बहुत ही करीब में आके जो है प्लेयर्स मैच से बाहर होते जा रहे हैं। वी सी हियर पीस एंड चिफली स्टिल सर्वाइविंग, the zone is shrinking inside and the zone is now going to be small. As we see here, the only spots, they're down with the 1-man standing. Gyro officials again with the 2-man standing. We see here the Ursula and the Ricker over chiefly back to lobby ho chuka hai. Team Gyro officials get a no from the only spots. We have the Destiny out there. Team only spots at top 2 with the 9 finishes, and Team Gyro officials. We see here the carry on in his meanwhile. Ursula and the Ricker peak and the karaoke eliminations, but the match is ended, beautiful people. And the winner chicken dinner goes to the Team Gyro officials for a beautiful and grand comeback. Congratulations. Top 2 we have the only spots. Top 3 we have the PCN spots. Top 4 we have the X7. Top 5 we have the HERMES. Top 6 we have the Team Exit. Top 7 we have the ZUCS. Top 8 we have the Sports. Top 9 we have 7E. Top 10 we have the Nightmare. Top 11 we have the Red Gaming. Top 12 we have the Team The Who. 13 we have Team 13 we have team कौन सा है team NGC. 14 we have team Mind Sports. 15 we have BOROHARI Sports, and the 16 we have team TNS. Wait, Nightmare at top 9. Top 10. 9 we have 7E. HERMES at top 5.
Sorry guys, sometimes multiple fights, of course. I don't want to say anything. Okay, that was a beautiful match. We go for the short break.
sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. Smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. You cannot get my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, watch me levitate. Try to paint me like a no-name, so sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you, please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies, you wanted my demise, now you're watching me rise, rise, rise. Up in the window, smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. You cannot get my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, hey, watch me levitate. Up in the window. Up in the window. Up in the window. Up in the window. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, levitate. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate. Watch me levitate. You cannot get my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, hey, watch me levitate. Up all night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know.
at our time, hoping that we did it right. And give me any reason to call you up late at night. And we know it's for the best, I won't put up a fight. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I always want stress, just like you know. I always want stress, like you. Oh, I always want stress, like you. Let's go. Just like you know, I always want stress, like you. Oh, I always want stress, like you. Let's go. Okay, guys, we are done with our short break. Where is Team 11? Who is Team 11? Where is Red Gaming? Huh? What happened to Red Gaming? Excuse me.
Okay, so sadly, don't know what happened. Red Gaming teams, they didn't join the lobby. Maybe. We waited extra 2 minutes for the Red Gaming, but maybe something happened to them. But sadly, I really like every teams, whether you are in the top or you are in the bottom, please give your 100% until the end. I'm talking about the every teams here. You guys can put your own assumption. So much of this thing, I don't care, but see, for me, seriously, I give my best. I really hope every teams give their best until the very end. So sadly, I hope Red Gaming will join the next match. We have the 60 players in the lobby with the same teams. Let's go and check it out one more time. Last match, chicken dinner teams, that is GYRO officials, those who are in the slot 10. Okay, we see here, and again, please, no hatred, no negativity is accepted here in my live stream, please. And let us enjoy the match, and please, it's a family and a friendly stream. Please do like the players who are playing there for you all. Okay, so second match of a day has started already, and it is the biggest map ever, Miramar. We are having a plane part that's coming from the eastern side of the map, from the junkyard area heading towards the Minas Delta. That's going to be the prison of Miramar. First match, chicken dinner by GYRO officials. Okay, we see here the teams are now dropping on their own drop locations. Okay, one teams, that's going to be the ZUCS. Jojo, can you tell me, is it the ZUCS? Oh my god, ZUCS or the ZUCS? I am always confused because in the slot list it is ZUCS, and in the name it's ZUCS. So Jojo, please help me in this. Yeah, I'm also hoping for the stable. My connection is already stable. I'm really like having this finger crossed, and in my heart always it's like ding 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 ding. I don't know how to explain, but anyway, let's go inside the match. We have one team in the Impala. That's going to be the only spots. There's so many teams are heading towards the central region of the map. That's going to be the San Martin Power Grid and the Graveyard. If anything happens to my stream, UD7 lady is in standby. She will go live instantly, so please no hate in now only. And my moderators, please do handle, because I cannot take all the negativity one more time. Okay, the TNS player, लास्ट मैच TNS प्लेयर के फेवर में बिल्कुल भी नहीं गया था. जीन ने एक फिनिशेस करके मैच से बाहर हुआ था. इस वाले मैच में बहुत सारे टीम्स, guys, what happened ना, in the even the big tournament like the PUBG Mobile Sports page only, or the BGMI or the BGMI Battleground page only, you go and check it. The fights, they do not concentrate in the fights in the last circle. You cannot cover each and every fights. Multiple fights going on. If you are having a good fights here and you are so intense and you are so like watching and concentrating in one fight, you cannot just go and jump in another fight. Try to understand. Okay, that happened for everyone. I try to cover every player here. Early fights, those who are engaging in a fight, I try to cover. Those who are not engaging in a fight, I do not cover seriously, because we come here to see the fights. Okay, TNS player आगे जा रहा है अर्ली फाइट से. यहाँ पे जो एक क्लासेस बन गया है, यानी कि क्लासेस बोलने से यहाँ पे जो एक ड्रॉप क्लैश होता है बन गया है टीम माइंड स्पॉट्स एंड टीम TNS के बीच में, लेकिन कोई भी टीम्स अभी तक फाइट में शामिल नहीं हुआ है. ओके, सो लेट्स को हमारा पहला सर्कल फॉर्म्ड होते हुए टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड. यहाँ पे जो है अगेन द सेम सर्कल फॉर्मेशंस नॉर्दर्न साइड, लेकिन इस बार सर्कल ने वेस्टर्न साइड को काफ़ी प्रेफर किया हुआ है. यानी कि अगर हम रिवाइंड करेंगे तो पिछले मैच इरेंगल का जो सर्कल था नॉर्थ ईस्टर्न साइड को स्लाइटली टच किया हुआ था, एंड बेसिकली लास्ट सर्कल जो था ईस्टर्न साइड से होते होते सेंट्रल रीजन में, यानी कि जो सेंट्रल ईस्टर्न होता है यहाँ पे फॉल हुआ था. इस बार नॉर्दर्न साइड एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे जो है सर्कल फॉल हुआ है. तो वी एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ शिफ्टिंग अगेन इन दिस वेरी
सेकेंड मैच एज वेल. ओके 7 का प्लेयर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने लिए लूट करा है. सच हेर्म्स का प्लेयर. इज इट प्रोनाउंस एट हेर्म्स or the Hermes? I don't know, but I'm calling them Hermes. Such Hermes. We have the player Janitsu, we have the player Frankie, we have the player Ace, and we have the player Mods. Okay, Mods. His name is Mods. Okay, they are safe. Meanwhile, in the Monte New area, meanwhile, we see here the western side, but TNS player finally in a very early far paraboy यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका बाई प्लेयर. टीएनएस यहाँ पे जो है एक नॉक निकालते हैं. सेंसी ने काफी कोशिश करा था अपने टीम्स के लिए कुछ करने के लिए. यहाँ पे अगर हम दिखा जाए टीम माइंड स्पोर्ट्स की तरफ से काफी इंटेंस रिटालिएशन भी देखने को मिल गया है. जीन की तरफ से माइंड का और एक प्लेयर्स मैच से बाहर हो चुका है. ओके टीम्स यहाँ पे जो है टीम 13 यानी कि टीएनएस के प्लेयर जीन बहुत ही प्यारे तरीके से अपनी जो टीम्स के लिए गेम दिखाते जा रहा है. सेंसी यहाँ पे जो है अपने टीम्स के लिए एक किल इकट्ठे करते कर गया है. जीन שלום, ביי ביי. כל טוב, תודה רבה. גם לך. ביי. Okay, so team TNA Jane and the player Sensi managed to have the 1-1 finishes for the teams. Meanwhile, at top 15, they have lost one player, Paraboy. Oh, Paraboy, a beautiful name. Again, a Paraboy, he is out of the match. Meanwhile, we see here from the team Mindsport, also they have lost 2 players at top 15 with the outnumbered player in the Miramar. Oh my god, in the Miramar. On top of that, in the tournament, in the grand finale, if you don't have the manpower, that's going to be a real trouble. In the last saga we see here, but again on the best of team Mindsports as well, and to team TNS. Let's go to the other side. In the San Martin, we have the team DT Sports player in the San Martin area. Meanwhile, yes, this is the San Martin area. कोई भी नहीं है. In the Hacienda, we have the team BOROHARI Sports. If I'm not wrong, BOROHARI Sports. BHE. How to pronounce that? BHE. Yes, it's a BHE. BOROHARI Sports. Coco Boy Whitey and the player out there at top 15 because of raid gaming. Okay, so that's why I'm having the confusion. None of the team have been eliminated from the match. The raid gaming player did not join the lobby. Maybe they will join. I urged them to join in the next match also. Here we go, team 5 in the Hacienda area. Completely the western side, northwestern side gonna be completely empty. The players still have a chance to make the rotations. But sadly, unfortunately, players don't have the information about who is there, who is not there. That's going to be the next question. But still in the Parasoi, we have the team NGC in their own former drop locations. Okay, Team GYRO officials who had their first chicken dinner in this name, they are in the Picado area. Let's see Team GYRO officials क्या इस वाले मैच में Team GYRO officials क्या यहाँ पे again वही कंसिस्टेंसी के साथ में आगे पे बढ़ पाएगा. पिकाडो का पूरा ही ये जो इलाका इन्होंने अपना नाम करवा के रखा हुआ है. Meanwhile, El Hazar में है ZUCS का player. We have, okay, this is ZUCS. Thank you, Jojo. Okay, if you're facing again the stream problem or what? ओके ZUCS प्लेयर एल हजार में फिलहाल के लिए ZUCS का प्लेयर बिल्कुल सुरक्षित है इस वाले मैच में. टीम ZUCS का प्लेयर क्या यहाँ पे कम बैक कर पाएगा? गonna be a big questions. Mama sabama. תגידי, מה? אני אעשה ניסיון בכל שעות מחר בבוקר. אני יודעת, סבא, אני יודעת. סבא, אני יודעת, בבקשה, אני יודעת. כמה שעות בלי להפריע אחד לשני. אני יודעת, סבא. אני מצטער שזה יוצא ככה. סבא, אני יודעת, बबकशा. ओके टीम द हु का प्लेयर फिलहाल के लिए जोन के बाहर में लॉस लियोनिस में स्ट्रीम. Guys, wait 1 minute. If this gonna go continue, then the Jojo will go live. Wait, we're not having a fight. Just a minute.
this is my VPN issue. ओके सो टीम द हु नाउ सेफ एंड सिक्योर यहाँ पे जो है लूट कर रहा है फिलहाल के लिए टीम द हु का प्लेयर्स. इनके सामने कोई भी नहीं है, लेकिन लैब एंड डेटा में एक और टीम्स यानी कि माइंड स्पोर्ट्स का बचे हुए 2 प्लेयर्स इन द लैब एंड डेटा एरिया. ओके अगर हम यहाँ पे दिखा जाए बहुत सारे टीम्स फाइट में अभी तक शामिल नहीं हुआ था, यानी कि कोई भी टीम्स फाइट में अभी तक शामिल नहीं हुआ था. पीस एंड स्पोर्ट्स का वाटर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है लूट करके आगे पे बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे टीम्स, यानी कि जीवित बहुत सारे टीम्स बोलने से यहाँ पे जितना भी टीम से सभी टीम्स यहाँ पे जीवित है. पहला सर्कल हमारा, सेकेंड सर्कल अभी तक श्रिंक नहीं हो गया है. वी सी हियर द सर्कल, ब्लू सर्कल श्रिंकिंग होके आगे पे आते जा रहे हैं. 7E का प्लेयर्स ने एक रोटेशन मेकिंग द रोटेशन ऑल द वे फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. वी सी हियर द 7E प्लेयर एक वेस्टर्न साइड से अपना जो है रोटेशन सर्कल करके अगर मेकिंग द रोटेशंस फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. एल्पोजो गना गो टोटली वैकेंट. यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो एक सर्कल यानी कि मैप होने की वजह से कंपाउंड्स, छोटे छोटे कंपाउंड्स, रीजेस बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे टीम ओनली स्क्वाड्स का प्लेयर भी इस वाले मैच में अपना जो टीम्स को लेके आगे पे बढ़ते गया है. इस वाले सेकेंड डे में जो टीम्स यानी कि इतने ब्यूटीफुली परफॉर्म करते जा रहे हैं, नाउ वही देखना इंटरेस्टिंग रहेगा. ओके टीम ओनली स्पोर्ट्स का प्लेयर आगे पे तो जा ही रहा है. सो नाउ लेट्स सी सेकेंड सर्कल श्रिंकिंग कहाँ पे हो जाएगा. ओके इन दी मिडल यानी कि नाइटमेयर का टीम्स भी आगे पे आ चुका है इस वाले मैच में. मैं देखना चाहूँगी कौन सा टीम्स यहाँ पे कम बैक कर पाएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा. टीम नाइटमेयर का प्लेयर आ चुका है इस वाले एरिया, यानी कि ऑल द टीम्स मोस्टली यहाँ पे जो है जितना भी टीम्स है एवरी टीम्स आर नाउ इन द सर्कल. नाउ वी कैन एक्सपेक्ट सर्कल कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. ओके वी सी हियर. It's okay now. I am sorry guys. सर्कल ने यहाँ पर जो है एक शिफ्टिंग ले चुका है. नाउ आई हैव अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट द सर्कल शिफ्टिंग. क्या बात है यार. X7 टीम्स कहाँ पे है? X7 टीम्स अभी तक फाइट में शामिल नहीं हुआ था. टीम द हु यहाँ पे जो एक रोटेशन बहुत ही लेट रोटेशन टीम द हु की तरफ से देखने को मिल रहा था. इनके आगे पे बहुत सारे टीम्स यानी कि एक जो रोटेशन शायद गेट की फाइट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. टीम एग्जिट एंड टीम एनजीसी के बीच में यहाँ पे जो है फाइट शामिल हो चुका है. जो टीम्स कहाँ पे है? टीम एनजीसी एंड टीम एग्जिट का प्लेयर. ओके टीम एनजीसी प्राइड यहाँ पे जो है अगेन इनका अर्ली एलिमिनेशन हो चुका है. प्राइड का बूब एंड कॉफिन एंड आउटकास्ट को निकालना पड़ेगा अब ये पूरा ही जो मैच, यानी कि प्राइड 16 बंदा था. शायद एक जो रोटेशंस में शायद इंफॉर्मेशंस गैदर करने के लिए आगे भी निकल गया था, शायद इस प्रकार इनका एलिमिनेशन हुआ होगा. आउटकास्ट ने प्लेयर सभी अपना अपना बगी को लेके ऑल द वे फ्रॉम द प्रू टू पैरासोय आगे जाने के काफ़ी कोशिश कर रहा था. बट मीनवाइल यहाँ पे जो सैडली प्राइड के एलिमिनेशन भी देखने को मिलते हुए. X7 का फाइट अभी तक नहीं हुआ था, बट इनके बिल्कुल सामने है टीम डिटे स्पोर्ट्स का प्लेयर इन द सेंट मार्टिन एरिया. जो टीम्स अभी बिल्कुल सुरक्षित है एंड इन द सर्कल, दे डोंट नाउ हैव टू टेक द प्रेशर अबाउट द रोटेशन and to take the compounds. We see here the player. Okay, fights. None of the teams are now engaging in a fights. We see the team TNS player ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो एक अर्ली फाइट्स निकाल के 2 points, यानी कि in this tournament at least 1 point skill points or anything, 1 single points do matters a lot. Team GYRO officials play on the knees. Meanwhile, the player who had the chicken dinner in a previous match carry on the knees. Meanwhile, Rekarope, Ursula and the Dexter now have to take this fight all the way to the last fight. I mean, now let's see. We have the team BOROHARI Sports, Team DD Sports and Team GYRO officials in the same region, in the same locations. Okay, so second fight in Miramar. यहाँ पे जो है teams players are now so ready for the fights. We see here Konsa, who will be the unfortunate teams to be that in the lobby. I mean, now we'll see here. अभी तक जो है एक भी टीम्स का एलिमिनेशन नहीं हुआ था. काफ़ी कोशिश यहाँ पे जो दिया जा रहा है. टीम गायरो की तरफ से पीछे से टीम डीटी स्पोर्ट्स का प्लेयर, यानी कि एक जो अपना दे नाउ हैव देयर ओन कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड मीन्स अ प्रॉपर कंपाउंड्स. दे नाउ हैविंग द कंट्रोल ओवर ऑल दी सेंट्रल रीजन. 2 teams are here in the central region fights. We have the 5 player. This is gonna be the BOROHARI Sports BH player Reckless all in all alone in this area. We have the
PCN spots coming from that area. No way, Reckless getting shot from Team GYRO. Not only that, Reckless with his beautiful mini 14 managed to have the one knock and trying to get a finishes in name. Reckless gonna go back to lobby by Team GYRO. That's gonna be the Wrecker OP. One more time for the teams. A beautiful contribution started already, people. That's gonna be the interesting match for the Team GYRO. One more time now. Let's see, people. Okay, team GYRO. We have team 5, but not happening a mini battle out here. But we expect team Exit and the team in this area, the team who are now making the rotations from the western side of the map, now having the second circle team, Team GYRO and Team DT Sports also in a long distance fight. One player Cario on the knees one more time by Team DT Sport. That's going to be the Jungle Boy, a Kratos, Sneak, and the Cypher. But also they're now having the the close fight. This is the long distance fight, not going to be so interesting. So we move into the next drop location. That's going to be the Hashanta or what, people? HERMES player in this match, do we expect a grand comeback from the team HERMES? Let's see. They're now having control over this whole the hills, the mountain, what to say, the hilly region, having this hilly region. Okay, इनके आसपास में कोई भी नहीं है, but I can see nightmare teams coming from that area, and this just a second circle. Miramar map gonna go long. We see here, we expect so much of fights from the people, from the player of the credit fields. We have the 7 teams. Meanwhile, all the teams, none of the teams are now engaging in a fight. Only in the situations, if we see here, none of the teams are engaging in a fight. If we see no clusters, it means we can only wait for the zone to shrink on, and we can only wait the zone can chase the players to be in the battle, people. Okay, we see here the Dr. X in the player, but इनके करीब में है पीछे से team X ZUCS का player. Okay, 17, one of the very good teams out here, JoJo teams, OD7 lady teams. We see here the X7, they had the early exit in the previous match. We expect a comeback from the team X ZUCS as well. Okay, let's see, people, you can spam your teams without any hesitation, just no hate in the chat. If you like the stream, you like the match, you can like the stream as well. Okay, the teams X school now have the informations. Is now solo player here and trying to regroup in this area. Okay, meanwhile the circle again यहाँ अभी तक जो है एक shrink नहीं हुआ है, third circle होने ही बाकी है. लेकिन X ZUCS का player, they're not in the mid also, they're not outside. ये जो circle agents hold करके यहाँ पे अपने लिए game खेलते जा रहे हैं. Okay, meanwhile we see here in this area, ये क्या बात है, PCN players यहाँ पे जो है fight में शामिल हो चुका था. PCN बोलने से कहाँ पे है team PCN? Where are the teams PCN? Okay, the first team PCN, they now have the one knock towards which team? We have the team BOROHARI Sports only, and I'm saying lemon, it's only, and the team who we see here. Okay, so many teams in this area. Fire being shots by team only as well, and team PC and Speedy who managed to have one knock towards team. Only Sam 6999 on the knees, Layman 18 trying to come there and to get a revival. But meanwhile we see a flex coming up with the actually fighting here between two teams, team the Who and the team only Spots. Now here in this region, but team Peace and Play are now fighting between the two teams. Now want to have the control over this region. We see here Who the Thai, Yannick, team the Who now taking the fullback out there. Flex in that area. We'll look at the position of team Peace and one player and the other player. I mean, like, they're so far from each other, trying to fight and have control over this compound as well. We see here the team only Spot Sam now have the revival, but on this area as well, team PC and from the height shooting against team the player Sam only and the Sam Lemon. Now they're stuck in that little ridge, they cannot able to fall back. We see here the one player eliminated now making the fullback. We see still the fights going on between these two teams in third circle, already shifted towards the player. Okay, in this area, so many teams from the water treatment now making the rotations. Only players still with the 0 finishes. But the big question is here now, the teams, who will be the teams to be eliminated from the first match? HERMES on the fights out here. We see here the player
in the 5 sections fun यहाँ पे जो है एक shots coming from team Sesaon towards which team out there. Okay, that's going to be the 7 teams in big trouble. We see the standard situations. That's going to be the modes coming up with the first finishes out for the teams. We see here that this is team SAG HERMES NGC outcast on the knees. Meanwhile, by the player team exit as well. Let me have a second out. So many team fighting here in this area. Team exit. Those teams were not in the circle, making the rotations. All the teams were not having the circle favorism and now being chased by the circle and the teams out there. Team Nightmare and the Mind Lobster on the knees. Meanwhile, people, let me have a second out here. In this area, we see the teams in the different position, but also the circle. They have the only 0 seconds and have team exit player Melvin managed to have the 1 finishes. Team NGC back to lobby जो है हो चुका है एक्स ZUCS का फ्लिप का यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है. टीम NGC का अगर हम बात करें both the one and only player, now he is also knocked down Coffin, the one and only player for the teams. क्या यहाँ पे Coffin अपना teams को revive कर पाएगा? Team NGC choking in this area while rotating inside the circle. On this side यहाँ पे फ्लिप गॉट पिकअप हो गया था, बट इनको रिवाइवल मिलते जा रहे हैं. बहुत सारे जो एक मल्टीपल फाइट्स है, यानी कि टीम्स एक पोजीशन को आगे बढ़ाने की काफ़ी कोशिश करते जा रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा इंटेंस जो फाइट टीम एग्जिट का और भी एक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है किल फिट में देखने को मिलती हुई. टीम एग्जिट यहाँ पे एक्स बॉस क्या है ESPORTS 7E एंड द प्लेयर 7E NGC एंड टीम एग्जिट इन द सेम ड्रॉप आई मीन इन द सेम रीजन. एक्स ZUCS बोलने से डर्टी एंड पीस इनके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट्स, यानी कि सर्कल के बाहर में फ्लेक्स यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है. चीफली स्पीडी हु एंड लीमन क्या अपने टीम्स के लिए आगे भी निकल पाएगा, यानी कि दोनों ही टीम्स एक दूसरे के लिए यहाँ पे जो है काफी अच्छी तरीके से फाइट दिखाए. बीच में है टीम द हु का प्लेयर. टीम द हु द ओनली टीम्स नाउ हैविंग द लीडर कम्बा, बट द मेन थिंग इज दे नाउ हैव टू calculate the time. They still have the 1 minute and the 10 seconds in their hand to within that time. If they do not have the vehicle, that's going to be the big trouble for both of the teams. Okay, finally with the good decision team who are now making their vehicle, but 70 players are now engaging in a fight as well. Oh my god, we're now having the ages fight. That's going to be a beautiful X Melvin with the 2 finishes already against team 70 going for the Molotovs. We see here from up that area, I mean from the hill, we have the team Sage HERMES coming from that side as well. So we see basically from this area we see the sandwich situation player that's going to be the team 70. Okay, क्या होगा गाइस यहाँ पे क्या होगा? मैंने क्या मिस कर लिया है इधर पे X7 नाना for the X7. Thank you so much for supporting your teams and thank you so much for your beautiful 200 super chat as well. X7 नाना open the chat. Okay, team SCG player team 70 and team X7 के बीच में काफी इंटरेस्टिंग जो ये फाइट चलते जा रहे हैं. अभी भी the main interesting things guys, अभी भी कोई भी टीम्स मैच से बाहर अभी तक नहीं हुआ है. Let's go 188 to watching. Let's go for the like as well. Okay, X7 player and the team the who के बीच में काफी इंटरेस्टिंग फाइट इन दैट एरिया. X7 बोलने से यहाँ पे जो है नो द डर्टी द हु द प्लेयर. नाउ ये जो एक गाड़ी के पीछे जो अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ था, यहाँ पे अगर हम दिखा जाए दैट हॉय एंड द रेड चाइल्ड, यानी कि यहाँ पे जो एक बहुत ही प्रेशर क्रिएट कर दिया जा रहा है इनके ऊपर में. NGC कॉफिन यहाँ पे जो है सोलो प्लेयर होने के बावजूद भी प्लेयर्स यहाँ पे एक फिनिशेस अपने टीम से निकाल चुके हैं. टीम एग्जिट का मेलविन यहाँ पे जो है मैच से बाहर होते हुए टीम NGC 1 पॉइंट्स के साथ में आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, बट द आउटनंबर्ड प्लेयर्स आउट देयर. Okay, let's go over to the team X7 का प्लेयर. X7 बोलने से यहाँ पे जो है फ्लिप गॉट निकालते हुए एक ब्यूटीफुल बोल्ट एक्शन शॉट टुवर्ड्स टीम पीस एंड वन मोर टाइम, बट इनको भी निकालना पड़ेगा. चिप यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है. कू की तरफ से एक नॉक जिनका मिलते हुए वन मोर टाइम टीम द हु, यानी कि रेड चाइल्ड. आई थिंक यहाँ पे जो है टीम द हु के लिए बचना कतई नामुमकिन. एंड पहला टीम मैच से बाहर होते हुए टीम द हु सैडली अनफॉर्चुनेटली टीम पीस एंड चिफली को यहाँ पे रिवाइवल मिलते हुए X7 का प्लेयर फाइनली फाइट में शामिल हो रहा है. ओके, अगेन अभी तक जो फाइट फाइट में शामिल नहीं हुआ था, फाइनली यहाँ पे जो है फाइट में शामिल होके डियो ने 1 फिनिशेस अपनी टीम से निकाल के रखा हुआ था. नाइटमेयर एंड टीम X7 इन द क्लोज फाइट वी सी हियर विद द UMP गॉड गन इन हैंड. यहाँ पे जो है डैश पे हो चुका है एंड डियो की तरफ से एक बहुत ही शानदार एलिमिनेशंस 1v2 करके अपने टीम्स के लिए सेवियर बनती हुई टीम X7 प्लेयर डियो विद द 4 फिनिशेस, नॉट लूजिंग एनी प्लेयर आउट देयर. वी सी हियर अगेन X7 इन फायर. क्या बोलते हैं गाइस? जेम्स यहाँ पे जो है 2 फिनिशेस अपने टीम्स के निकाल दिया है टीम X7 का प्लेयर. प्लीज डोंट हैव टेकन डाउन द प्लेयर फ्रॉम टीम X7's टीम एज वेल. 7 का प्लेयर यहाँ पे जो है अच्छे खासे कंपाउंड इनके लिए यहाँ पे जो देखने को मिलते हुए इन दिस वेरी लास्ट फाइट. वी सी द सेंट्रल फाइट्स हैपनिंग. टीम Sage HERMES going in that area, but I did not notice we have also the one player from team Mindsport. This is Tokia.
क्राटोस यहाँ पे जो है एक नॉक निकालते हुए टुवर्ड्स द क्राटोस यहाँ पे जो है सोलो प्लेयर अगेन फ्रॉम द टीम DT स्पॉट्स यहाँ पे जो गाड़ी से ही ब्लास्टिंग होके ब्लास्ट हुआ, सब कुछ हो गया है, मैच से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट साइबर एंड जंगल बॉय टॉप 13 में क्राटोस रहता है अकेले, ओनली मी का प्लेयर, ओनली स्पॉट्स का प्लेयर यहाँ पीछे से पूरा ही टीम से आगे आने की कोशिश। 7 का डॉक्टर एक्स यहाँ पे जो काफी इंटरेस्टिंग कर रहा था, बट क्राटोस की तरफ से एक नॉक निकालने की कोशिश किया था, बट पीछे से लेमिन या डेस्टिनी कौन था, एक कवर फायर इनके लिए था। टीटी स्पॉट्स का एलिमिनेशन टॉप 13 में देखने को मिलते हुए। ओके, ओनली स्पॉट्स का प्लेयर यहाँ पे जो रिवाइवल के लिए जा रहा था, बट टीम गायरो का प्लेयर अगेन फाइट में यहाँ अभी तक शामिल नहीं हुआ था, बट स्टिल दे आर नाउ विद द मैन power. We see her team only spots eliminating के पास में है 4 finishes all in all, solo finishes इन्होंने अपने लिए निकाल के रखा हुआ था. That's going to be the quite interesting. ओके, टीम माइंड स्पॉट्स इन द प्लेयर, क्या बात है यार. टीम माइंड स्पॉट्स यानी कि जो है टीम माइंड स्पॉट्स यानी कि जो सोलो प्लेयर फाइट निकाल रहे थे, बट टीम गायरो की तरफ से रेकर पे शायद यहाँ पे जो है और भी एक नॉक निकालते हुए अपने टीम से टीम एनजीसी कॉफिन का बचे हुए प्लेयर, नॉट एनजीसी, दिस इज द बोरोहारी प्लेयर, आगे की जाता भाई साहब ब्लू का जो नॉक देने को मिला था बाय टीम pretty well as well. Gyro player Reiko Ruby managed to have the 1 finishes also in the name at top 9. Oh my god, multiple fights happening in this area. Players going crazy. We have the HERMES teams X7 team क्या बोलते हैं PCNs and team 70 team Gyro and team TNS. We see here again कौन सा teams को मिलेगा chicken dinner home tonight in the very second match of the player. They still have 3 more match to go. Okay, team Borohari players are not going down. Red Scammer, the one and only player fighting against team Gyro officials, but that's not gonna happen because outnumbered player and बहुत ही काफी ज़्यादा जो प्रेशर इंटेंस जो ये फाइट देखने को मिल रहा था. गायरो का टीम से जो ओपनली आगे जाने के प्रयास करते हुए इनके बिल्कुल आगे पे है और भी एक टीम्स क्या करियो को यहाँ पे जो पिकअप कर पाएंगे स्कैमर, क्या अपने टीम्स के लिए 1 फिनिशेस निकाल पाएंगे. टीम बोरोहारी स्पॉट्स का प्लेयर करियो के ऊपर में क्या शॉट्स लेने पसंद करेंगे, बट X7 डिवाइड यहाँ पे जो है और भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल नॉक निकालते हुए बाय द ग्रेनेड्स इटसेल्फ दे नाउ हैविंग द हाइट एडवांटेज. नॉट ओनली दैट, टीम 70 डॉक्टर एक्स आ चुका है मैदान में. वी सी हियर वन मोर टाइम नॉक कमिंग फ्रॉम द टीम 70 डॉक्टर एक्स. Red Scammer एक सोलो प्लेयर होने के बावजूद the player managed to have the one Gyro player in trouble now. I see here the team PCN and team Borohari player के बीच में फंस चुके हैं. टीम Gyro का प्लेयर only 11 यानी कि only players from that side. I was thinking कहाँ से यहाँ पे पड़ रहा था, but टीम Gyro के लिए इस वाले मैच में लेकिन beautiful game play again at top 8 इनका elimination देखने को मिलते हुए. टीम 70 again फाइट्स में काफी इंटरेस्टिंग तरीके से जो देखने को मिल रहा था. AKOGS एंड डॉक्टर एक्स टीम यानी कि बोरोहारी स्पॉट रेड स्कैमर सोलो प्लेयर होने के बावजूद भी अपने टीम्स यहाँ पर जो है 2 फिनिशेस निकालते मैच ऐसे बाहर हो चुका है एट टॉप 6. We see here the stage HERMES for the beautiful and the grand comeback award. We see here the player, let's see Frankie in the buggy यहाँ पे जो काफी कोशिश कर दिया जा रहा है. 7 का प्लेयर 3 प्लेयर्स के साथ में अभी भी जीवित है. फ्लाइंग ग्रेनेड्स, get to see we're now having the fight between team 70 and the X7, but only spots का प्लेयर पीछे से आते हुए team X7 का प्लेयर dash in the James in that area. We see here the player only Sam 999 X7 Dio का eliminations करवाते हुए in this very crucial situations. Only eliminated in final watch. People, we see the solo 6 finishes all in all in fire. Only spot now moving forward with a randomly and a bonus towards team James and the towards team. So many teams down with the top 3 teams. We have the only eliminating in fire with the 7 finishes already and the 11 finishes for the teams. That's going to be the grand comeback for the team only spots as well. Destiny, Sam and the Magara in fire. People, mind-blowing performance. Mind-blowing performance. Come on guys, like this stream. Okay, 70 player will still have the AKOG's doctor and the Izzy 10. We see player Sam की तरफ से और भी एक नॉक यानी कि इस वाले मैच में इस वाले टाइम में if you are now having the grand opening then this might lead you for the counter action. Like, oh my god, team only sports now dominating this last sucker. We see here the player not going crazy. Oh my god. Okay, 70 top 3 team still क्या बात है. Okay, Sage का प्लेयर क्या कौन है. Okay, I thought यहाँ पे Sage का elimination हो गया था, but Genitsu still in the match. We see here with the 1 finishes 2 finishes. Sage HERMES का एक बहुत ही बड़ा सा comeback भी देखने को मिल गया है इस वाले मैच में. अब 70 का प्लेयर्स का
बहुत ही बड़ा सा सवाल है. But we see guys, the position wise, if we predict here, team only spots having the height advantage. Chicken dinner, so easy for team only spots. Now if we analyze the situation like this, wow, I just want to know team 16 का प्लेयर सेचहेम जेनित्सु किस प्रकार अपने आप को यहाँ पे दर्शाएगा. But Sam, I think यहाँ पे जो he now sends something, he just plotting, deploying the smoke in that area. But let's see people, not happening really. Oh my God, 11-18 का था बोल्डनेस इनके लिए भारी पड़ गया. यहाँ पे जो ओवर कमिट कर दिया लेमिन की तरफ से, एक नॉक निकालने के प्रयास बा. 7 एक ही और चीज के हाथों पकड़ चुका है टीम लेमिन का प्लेयर. इतने ज्यादा क्रूशियल मोमेंट में आके टीम 7 के हाथों से टीम लेमिन, oh my God, दो पिकअप होते हुए. ओनली डेस्टिनी, क्या था रे भाई साहब, ओनली डेस्टिनी का 1 ग्रेनेड्स अपने टीम के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे जो है एक कंट्रीब्यूशन टीम द प्लेयर ओनली डेस्टिनी की तरफ से देखने को मिलते हुए. 15 जो फिनिशर से उन्होंने निकाला था. 7 डॉक्टर एक्स के एलिमिनेशंस, बहुत ही प्यारी तरीके से जो एक एलिमिनेशन दिखाते हुए टीम ओनली स्पॉट्स का प्लेयर का Genitsu, the solo player for the teams, managed to be at the top 2, and yes, winner chicken dinner goes to the team only spots. Here we go at top 1 with the beautiful finishes. Not only that, top 2 we have the team Sesaon for the beautiful comeback. Congratulations. Top 3 we have the 7E. Top 4 we have the X7 player. 5 we have the team TNS. 6 we have the team BHE Borohari spots, and top 6 we have 7 we have the piece and the following up with. Wow guys, congratulations team only sports for your beautiful performance. Okay, the next map we have Sanhok, and following up with Miramar and the Erangle. For that we go for the short break. Up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. I just don't know. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So will I feel it again? I just don't know. I just don't know. Looking back at our time, hoping that we did it right. And give me any reason to call you up late at night. And we know it's for the best, I won't put up a fight. Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm
I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So when I feel it again, I just don't know. I just don't know. I just don't know. 'Cause when the daylight comes, I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me, how could you leave me so low? So when I feel it again, I just don't know. I just don't know. Always want just like you know. I always want stress like you. Always want stress like you. Let's go. Always want just like you know. I always want stress like you. Always want stress like you. Let's go. Visions of you, with you. I'll be irritating.
against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. In a crowd, and now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. 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 You will be close. I will wait as long as it's for you. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is
guys, welcome back to the live stream. The very third match of a day in Sanhok has started after a long break. We give break time for the players to charge and eat and drink and have some little rest for the fingers as well. It's not good to play continuously back to back without break. So yes, we give a break here before Sanhok map as well as for me as well. Okay. Okay, so guys, match has started, everyone. And the third match of a day in Sanhok, the very small map exactly opposite of Miramar, has started, and we see here the teams already. The overall standing we are providing after each match, and so we know the teams who top the table, the teams who need to maintain their consistency, the teams who need to have their comeback, the teams who need to play in their own way. Okay, Sanhok map, we cannot predict anything as it is a very small map with a very less compound, with a very less vehicle usage, and so much of very exactly the opposite, you know, like of all the maps out there we see here. And I also see it's very hard, and in other words, it's very hard to perform in Sanhok. I say in Sanhok depends upon a luck. Every player have the gunpowder here, every player have the IQ, but also here in Sanhok, the luck really matters. So we see here the PCN player are now dropping in this area. In front of them, we see the team GYRO as well. The teams who had one chicken dinner in the name. We see here so many teams are now targeting toward the Takmok and the Monganai area as well. Okay, so X7 player, the only teams in the western eastern side that is in the Camp Bravo compound, we have the team TNS in the Kampong Lakawi, not Lakawi, it's a Kampong. X7 player, one player, it's targeting going towards the Lakawi as well. We have the team exit so close to team X7 as well. We have the team Nightmare in the quarry area. GYRO in the central region of the map near to, but in the Paradise we have the team Mind Gaming in this area with the HERMES, Takmok area. So many teams in the northern side of the map. We see here the team ZUCS in this area very alone. Only spots who had the previous chicken dinner in the Hartin area. We have क्या बोलते हैं team The Who in the Camp Charlie and team BOROHARI in the Painan. And okay, so many teams in own drop location. Let's go and start with the team The Who. In the Painan, it means the teams were not in the circle 507. Oh my god, Jungle Boy on the knees. Meanwhile, by the teams, kahan pe fighter? Okay, this is a fight between Team NJC, Pride and Above got their one finishes already in Takmok area between Team DT Sports, Team Sesaon and Team NJC. Three teams are now in the same drop locations. We see here the teams. Okay, and early fights has begun already. So we see here the team NJC both already एक finishes इन्होंने अपना नाम करवा के रखा हुआ है, जहाँ पे पीछे पे है टीम सेज हेम्स का प्लेयर as well. Genitsu काफी low है. We see the Cyberneak and the Kratos of the Jungle Boy का early elimination हो चुका है. DT Sports are playing without IGL. Anyway, let's see. Okay, team Sage Hems player Frankie Ace and the Genitsu in that area. We see here NJC यहाँ पे अच्छे खासे compound. Meanwhile, the teams are in the circle. बहुत ही अच्छी तरीके से circle के अंदर में है, लेकिन बहुत सारे teams इनके आसपास में. So now we see luck इनके ऊपर में जाएगा. यहाँ पे अगर हम बात करें तो team Sage Hems का player आगे जाने के लिए काफी forward है. Kratos open lead करके आ रहा था. Kratos open यहाँ पे जो है मैच ऐसे बाहर हो चुका है. They are choking like anything. I'm sorry. Okay, तो team Sage Hems जिन्होंने लास्ट मैच में #2 लाए थे, इनका जो एक कमबैक देखने को मिला प्रीवियस मैच, यानी कि दिस इज आवर थर्ड मैच हैपनिंग. फर्स्ट मैच इन Erangle Sage Hems का एक मिड एग्जिट कहाँ पे हो गया था, पर इस वाले मैच में टीम्स लास्ट मैच में इनका #2 आ गया था, पर इस वाले मैच में अगेन अच्छी खासी जो स्टार्टिंग देखने को मिल गया था. निक एंड साइपर अब इस वाले मैच में क्या करेंगे, अच्छे खासे दे डोंट इवन हैव द वेपन. साइपर के पास वो तो वेपन भी नहीं है. सो बहुत ही बैड लक डीटी स्पोर्ट्स के ऊपर में गिर गया है. सो माय वेरी ओन टीम्स, आई डोंट नो व्हाट टू से. ओके, गायरो प्लेयर्स बूट कैम्प में है. गायरो प्लेयर्स बूट कैम्प के आसपास में है. एक्सजक्स का प्लेयर
ex-ZUCS player and team GYRO teams are in the boot camp area. We see here now. Let's see what will be the outcome. Okay, in the cow area we have the team NGC, but अगर हम यहाँ पे बात करें 7E का प्लेयर पीछे पे ओनली E का टीम्स बिल्कुल इनके पीछे पे है 7E का प्लेयर. ओके सो लेट्स सी यहाँ पे जो सनहोक का मैप होता है श्रिंकिंग यानी कि जो सर्कल का शिफ्टिंग होता है या स्विंगिंग होता है बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा. 7E का प्लेयर इनके सामने कोई भी नहीं है. पीसीएन का प्लेयर जिनके सामने है टीम नाइटमेयर, ये कि साइपर यहाँ पे जो है डाउन हो चुका है. एसईजी यानी कि टुडे इज नॉट अ डे फॉर डीपी. नीट के पास में गन भी नहीं था. Sadly, unfortunately, with their drop locations, they didn't even have a weapon. That's going to be the first team to eliminate from the match by Team Sage and Team so many teams in that area. Frankie and the player managed to have the 3 finishes already in the nib. Okay, we see in the area कौन बात करें अभी तक. नाइटमेयर का अगर हम बात करें यहाँ पे नाइटमेयर का प्लेयर्स एक जो ओपन फील्ड में इन्होंने अपने आप को लोकेट यानी कि करके रखा हुआ था. बहुत सारे टीम्स यहाँ पे जो है फाइट में आने ही वाला है. सर्कल का अगर हम बात करें ब्लू सर्कल अभी तक श्रिंक नहीं होता है. पहला टीम्स मैच से बाहर हो चुका है डाउन विद 15 टीम्स. ओके, रेड गेमिंग पिछले मैच में रेड गेमिंग का प्लेयर नहीं आए थे. इस वाले मैच में होल्ड ऑन. ओके, इस वाले मैच में टीम रेड गेमिंग का प्ले एक बहुत ही दूर यानी कि सर्कल से बहुत ही ज़्यादा दूर रेड गेमिंग का प्लेयर मौजूद है. इस वाले मैच में अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच का पूरा ही कवर अप करना पड़ेगा इन लोग को. तो इस वाले मैच में नाउ लेट्स सी क्या टीम रेड गेमिंग का प्लेयर इस वाले मैच में क्या कवर अप कर पाएंगे अपने आप को. फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है रेड गेमिंग बहुत ही ज़्यादा यानी कि नॉर्दर्न साइड में सर्कल फॉर्म हो गया है. रेड गेमिंग का प्लेयर दे आर इन द साउदर्न साइड. सो इन दिस एरिया साउदर्न साइड से आगे निकलना जोन की आगे भी निकलना उतना आसान नहीं होता है. बट ऑल्सो ऑल द बेस्ट टीम रेड गेमिंग एज वेल. टीम द हु के पास में एक जो राइट साइड में एक और टीम्स है यानी कि यहाँ पे जो है टीम द हु का प्लेयर रिक्स वी हैव द टॉय रेड चाइल्ड एंड द प्लेयर फेरियम. ओके, इनके सामने है टीम टीएनएस का प्लेयर. जो भी टीम्स यहाँ पे सेकंड सर्कल का वेटिंग सबको ही है. प्लेयर्स को है, मेरे को है, ऑडियंस को है, सबको है सेकंड सर्कल का वेटिंग. नाउ लेट्स से सेकंड सर्कल स्विंग तो होते जा रहा है. क्या ईस्टर्न साइड में जाएगा या सेंट्रल में ही आएगा या नॉर्दर्न में जाएगा या कहाँ में जाएगा ये वो तो हमको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा. बट यहाँ पे जो है बोरोहारी का टीम्स BGMI प्लेयर बोरोहारी स्पोर्ट्स का प्लेयर इस वाले मैच में क्या बोरोहारी का प्लेयर्स अपने टीम्स के लिए क्या प्रदर्शन कर पाएंगा. बहुत सारे टीम्स बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे चोक भी हो रहा है इस वाले मैच में. ओके, टीम बोरोहारी स्पॉट्स आगे पे है. क्या है हमारा सर्कल स्विंगिंग होते जा रहा है. इन द मिड वी हैव द नाइटमेयर स्पॉट्स एज वेल. ओके, नाइटमेयर का जो टीम्स है नाइटमेयर का उतना स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से किया था. पीसीएन ओह माय गॉड चीफली ने एक पिक में ही यहाँ पे M416 वर्सेस M16 का फाइट चल रहा था. सिंगल शॉट एंड स्प्रे यानी कि स्प्रे यहाँ पे उतर के आ रहा था. टीम नाइटमेयर यानी कि पीसीएन स्पॉट्स यहाँ पे जो है एक ओपनिंग पॉइंट से निकालते या और भी अगर एक ओपनिंग पॉइंट निकालते हुए वेज गेट यहाँ पे जो है दो नॉक निकालते हुए टीम पीसीएन स्पॉट्स का प्लेयर. लेकिन वी कैन सी हियर वन प्लेयर DRJ एंड द प्लेयर इन दैट हिली रीजन. यहाँ पे कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेयर्स अपने से बहुत ही दूर है लेकिन पीसीएन स्पॉट्स को स्लैम इन करने के लिए यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स जो है रिवाइव हो चुके हैं. लेमिन यहाँ पे जो है अपना जो एक फ्लैंकिंग यहाँ पे जो दिखाते हुए बयास के अगेंस्ट में यहाँ पे DRJ WFU की तरफ से चीफ रिफ्लेक्स टीम पीसीएन स्पॉट्स का प्लेयर जो टीम्स आगे में निकाल रहे थे. टीम यहाँ पे जो है नाइटमेयर एक बहुत ही ज़्यादा रिटालिएशंस निकालते हुए आगे बढ़ते जा रहे. नाउ वी सी हियर द पीपल कौन सा टीम टॉप 14 के अंडर में जाएगा, कौन सा टीम टॉप 15 में ही रह जाएगा. टीम्स पीसीएन स्पीडी हु की तरफ से आते हुए गन फाइटर यहाँ पे जो पिकअप हो चुका था. गन फाइटर की तरफ से एक जो यहाँ पे ग्रेनेड्स
देखने को मिल गया था, बट काफ़ी दूर ग्रेनेड्स का गन फाइटर यहाँ पे बाँचना नामुमकिन। स्पीडी हु अपने टीम्स के काफ़ी कोशिश करते जा रहे हैं। चिफ्ट यहाँ पे जो है एलिमिनेट हो चुका है। फ्लिक्स अभी तक भी जो लीडर, बस स्पीडी हु का ब्यूटीफुल नेट से अपना टीम्स के लिए फिनिशेस गैदर करते हुए टीएनएस पैराबॉय निकालते हुए पूरा रेक्स यहाँ पे जो पिकअप हो चुका था। टीम गायरो एंड द प्लेयर, मल्टीपल फाइट्स गोइंग ऑन इन दिस एरिया बुट कैम एज वेल। टीम X7 का प्लेयर को बात करें, 17 यहाँ पे जो पिकअप हो गया था। एक्स कूल एंड टीम गायरो इन अमीनी बैटल आउट करी यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है। रेगरोपी की तरफ से यहाँ पे फ्लिप गॉड पिकअप हो चुका था पीछे से सेज हेर्मेस का प्लेयर एज वेल। वी आर आल्सो हैविंग अ वेरी मल्टीपल फाइट। लेट मी हैव अ सेकंड साउंड योर पीपल। टीम गायरो प्लेयर Ursula is getting some shots out there by the player from team ZUCS cool out there. We see here the team the who red child also coming up with a 1v1 to move Dexter and the player X cool. Let's see people don't know he players ki completely एक हो HP, but Dexter managed to have the one knock on the other side. ZUCS cool का elimination देखने को मिलते हुए by team GYRO as well. Team the who in a fight as well. Let's go over to the team the who. Multiple fights happening. जब fight नहीं होता है तब नहीं होता, जब होता है तो सब ऐसा ही होता है। पूरा रेक्स यहाँ पे जो है रेड चाइल्ड को रिवाइवल मिल चुका है। फेरियम यहाँ पे जो है निकालते हुए 2 फिनिशेस टीम द हू रेड चाइल्ड के नाम निकाल चुके। टीएनएस का प्लेयर पैराबॉय एंड द प्लेयर अगेन मैच से बाहर टीम स्टेज की तरफ से थर्ड पार्टी हैपनिंग इन दैट एरिया बिटवीन टीम गायरो। वन मोर टाइम यहाँ पे जो है टीम द हू फेरियम की तरफ से गाड़ी से ही यहाँ पे निकाल दिया, कुचाल दिया। 2 फिनिशेस 4 फिनिशेस टीम द हू निकालते आगे पे बढ़ते जा रहे हैं। मीनवाइल देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, but team the who the players have been eliminated from the match. That's going to be the team TNS by team the who again at top 14. We see here the teams again outside the circle. We have the team X7 player from behind team BOROHARI sports are coming. So team the who को काफी होशियारी के साथ में यहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि team BOROHARI player still behind them. So we see here, let's see. सेकेंड सर्कल यहाँ पे जो है फॉर्म हो चुका है इन द सेंट्रल रीजन इन द रेड गेमिंग। यहाँ पे जो है बूट कैंप के आगे पे बढ़ते जा रहे हैं। क्लस्टर्स अगर हम दिखा जाए काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्स बन गया है इन दिस एरिया। कहाँ पे फाइट हो रहा था, पीछे स्पॉट्स का प्लेयर जो फाइट में शामिल हुआ था, एक प्लेयर इन्होंने गवा दिया है टॉप 14 में। एक फिनिशर्स टीम नाइटमेयर का प्लेयर अगेन इनके बिल्कुल सामने एक गेट कीप करके बैठा हुआ था। मेरा स्ट्रीम को ना मतलब एक बार बीच में इट हैज़ टू बी लाइक यू नो लाइक काइंड ऑफ रोबोटिक, इट हैज़ टू बी। So this is given, so please do not mind it. Okay, team the who, the player piece in 25 but out by the player who coming here without any information about the player position out there. Get caught, 2 player down. Team Nightmare who are playing so good. Meanwhile, in this situation, they are now going back to lobby. We see LPC in flex in form again with a beautiful 2 knocks out there. One यहाँ पे जो है player WFU player क्या अपने teams के लिए यहाँ पे बाहर जा पाएगा? Oh my god, टीम पीसी प्लेयर टॉप 14 में यहाँ पे 3 फिनिशेस निकाल दिया है टीम नाइटमेयर का। छोटा सा गलती टीम ओनली मी स्पॉट्स का यहाँ पे जो है फाइट देखने को मिल रहा है जिससे बॉब यहाँ पे जो है एंड आउटकास्ट भी डाउन हो चुका है। कॉफिन एंड द प्राइड को निकालना पड़ेगा अब ये पूरा फाइट अगेंस्ट टीम ओनली स्पॉट्स। वन मोर टाइम टीम ओनली स्पॉट्स इन्होंने चिकन डिनर लाए थे लास्ट मैच में। कैच वाले मैच में अगेन अपने टीम्स के लिए क्या आगे पे बढ़ा पाएगा? ओके वी सी हियर द ओनली टीम्स यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा ओनली लेमन एंड एनजीसी प्राइड की तरफ से एक नॉक देने को मिलती हुई। मीनवाइल यहाँ पे अगर हम दिखा जाए टीम एनजीसी प्राइड ने एक पिकअप किया था लेकिन खुद भी यहाँ पे जो नॉकडाउन हो चुका है। वन एंड ओनली प्लेयर कॉफिन यहाँ पे जो रिवाइव के लिए आगे बढ़ते जा रहा था बट पीछे से टीम माइंड स्पॉट्स अगेन वी कैन सी आउट हियर थर्ड पार्टी बाय टीम माइंड स्पॉट्स एज वेल। क्या हो गया? Okay, on this side we have the team only spots. In the middle we have the team NGC. On the heels we have the team mind spots. NGC outcast यहाँ पे जो है revived हो चुका है by coffee. Now they have to fight back. Now we see here people क्या होगा? ओनली 11 की तरफ से प्राइड यहाँ पे जो है मैच से बाहर हो चुका है बट ओनली डेस्टिनी के ऊपर में शॉट्स पीछे से पड़ते जा रहे टीम माइंड स्पॉट्स की तरफ से। यहाँ पे बेसिकली अगर हम दिखा जाए टीम माइंड स्पॉट्स के पास में एक बहुत ही अच्छी तरीके से जो एक हाइट का एडवांटेज है। यहाँ पे माइंड स्पॉट्स का प्लेयर अच्छे तरीके से अगर कैपिटलाइज कर पाएगा तो इनके लिए काफ़ी अच्छे भी होगा। बहुत ज़्यादा किल्स इनको मिलने वाला है बट इतना आसान भी नहीं है। पीछे में है बहुत ही अच्छे टीम्स टीम एनजीसी एंड टीम ओनली स्पॉट्स के बीच में एक क्लोज फाइट स्टार्ट होते हुए मगारा एंड द प्लेयर आगे जाने की पूरी कोशिश करते हुए बट दे आर ऑल्सो गेटिंग शॉट्स फ्रॉम दैट एरिया फ्रॉम द हिल रीजन। 1 decent opening points टीम एनजीसी के अगेंस्ट में यहाँ पे जो स्लैमिंग देखने को मिल जाएगा। कॉफिन एंड आउटकास्ट यहाँ पे जो है रिवाइव हो चुका है। आउटकास्ट एंड कॉफिन क्या यहाँ पे अपने टीम के फाइट बैक कर पाएगा? टीम ओनली स्पॉट्स का प्लेयर आगे पे आते जा रहे हैं। कॉफिन अभी तक जहाँ पे जो हील अप करते जा रहा था अभी अगेन यहाँ पे जो खिड़की से शायद यहाँ पे जंप शायद देखने को मिल जाएगा। नॉट अ गुड कंपाउंड टू बी हियर बट मीनवाइल आउटकास्ट की तरफ से 2 नॉक देखने को मिलते हुए अपने टीम से यहाँ पे
that's not gonna happen. But देखते देखते टीम यहाँ पे जो है ओनली मी का प्लेयर मैनेज टू हैव द लेमन यहाँ पे जो है अपनी टीम्स का फेवरेट बन गया, बट आउटकास्ट से काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है शॉट्स निकाले थे, दो नॉक निकालने के बावजूद भी अपना टीम्स के लिए किल सिक्योर नहीं कर पाया। डाउन विद द टॉप 12 टीम्स। नाउ टीम क्या बोलते हैं, टीम ओनली स्पॉट्स का प्लेयर क्या टीम माइंड स्पॉट्स से बढ़ के यहाँ यानी कि यहाँ पे पार करके ओवरकम करके क्या आगे पे बढ़ पाएगा। टीम माइंड स्पॉट्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस वाले जो क्या बोलते हैं पैराडाइज रिजॉर्ट में इन्होंने अपने लिए एक कैंप करके बैठा है। बहुत सारे टीम्स आ चुका है, टीम एग्जिट का प्लेयर्स भी आ चुका है इस वाले रीजन में, जो टीम्स अभी तक फाइट में शामिल नहीं हुआ था। इज इट क्रशिंग? ओके, थर्ड सर्कल जो है हमारा यहाँ पे बन चुका है। बहुत सारे टीम बूट कैंप में अगेन यहाँ पे जो है गायरो टीम्स दहू का प्लेयर्स आगे जाने के पूरे प्रयास करते जा रहे हैं, जिनके सामने बहुत ही ज़्यादा टीम्स यानी कि तीसरा सर्कल में इतना रफ्तार जो फाइट सनहॉक मैप में देखने को मिल जाएगा, लेकिन हीलिंग पैटर्न भी उतना ही देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। टीम बोरोहारी स्पॉट्स का प्लेयर अभी तक फाइट में शामिल नहीं हुआ था। टीम 7 का प्लेयर फाइट में शामिल नहीं, लेकिन दे आर ट्राइंग टू गो इन द बूट कैम्प एरिया, स्विमिंग एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो है आ चुका है। मैंने बोला था ऑलरेडी यहाँ पे जो है टीम्स इन द सनहॉक एरिया, इन द सनहॉक यू डोंट गेट टू सी अ मच यूजेज ऑफ द व्हीकल। Okay, in this third circle, we are now having the 12 teams. 7 players आगे जाने की पूरी कोशिश करते जा रहे हैं। मीनवाइल क्या अपनी टीम्स को टॉप 11, टॉप 10 यानी कि लास्ट फाइट तक ले जा पाएगा, क्योंकि इनके सामने बहुत सारे टीम्स देखने को मिल जाएगा। रोटेशन से बहुत ही ज़्यादा फाइट्स देखने को मिलने भी वाला है, जहाँ पे बहुत सारे टीम्स। ओके, टीम SG यानी कि सेज हर्म्स का प्लेयर यहाँ पे अच्छे खासे एक गेट कीप के लिए दे आर नाउ सिचुएटेड in the area, they might be okay, इनके सामने कोई भी नहीं है, so okay, they are now in the big not big, they are in the good compound. ओनली मी, क्या बात है यार। माइंड स्पॉट्स का प्लेयर जो पीछे से बहुत ही अच्छी तरीके से लिया था, बट एक 7 का प्लेयर जो टीम्स फाइट में शामिल अभी तक नहीं हुआ था। आई थिंक द प्लेयर डैश इज गेटिंग सम शॉट्स बाय टीम। आगे कौन सा टीम है? टीम बहुत सारे टीम्स है, यानी कि वी हैव द प्लेयर टीम माइंड स्पॉट्स। Now Dash have only one freaking hell kit in the name, that is also is popping their hell kit. यहाँ पे इनको उतना अच्छा hell kits नहीं मिला, इनको बच के without losing any damage, without losing any HP, I mean you have to be in the circle. क्या ये होना क्या बोलते हैं, मतलब क्या ये होना पॉसिबल है या नहीं? X7 का प्लेयर डैश डिवाइड, इनके उनमें शॉट्स काफ़ी हैं। X7 का प्लेयर बहुत ही लेट, रोटेशंस यहाँ पे इनके फेवर में नहीं जा रहा है। मीनवाइल ओके, तो सर्कल ने एक बहुत ही बड़ा सा हार्ड शिफ्ट ले लिया, जहाँ पे जिनका क्या बोलता है ओके, जिनका आउटकम आई डोंट गेट द वर्ड्स, जिनका आउटकम बहुत ही यहाँ पे भारी होने वाला है। टीम गायरो को निकालना पड़ेगा सर्कल के अंदर में। 10 सेकंड इनके हाथों में है, इनके बिल्कुल सामने है टीम 7 का प्लेयर। इसमें स्ट्रीम क्रशिंग अगेन अ लॉट और व्हाट? ओके, सो गाइस मैच खत्म होने वाला है। इफ स्ट्रीम कंटिन्यूस लाइक दिस देन आई विल नॉट डू एनी मोर। ओके, टीम क्या बोलते हैं, टीम रेड गेमिंग, टीम दहू एंड टीम एग्जिट एंड टीम एग्जग ऑल्सो इन द सेम एरिया। एक जो फाइट होने ही वाला है इनके बीच में बूट कैंप एरिया, जहाँ पे सर्कल कतई नहीं है। SG हर्म्स की तरफ से एक नॉक देखने को मिलते हुए। लेट्स गो ओवर टू द टीम SG। ओके, हर्म्स बोले से फ्रैंकी यहाँ पे जो है 2 किल निकाल दिया था। इट इज़ नाउ 5 बिटवीन टीम X7 एंड द टीम SG। यहाँ पे जो जेनित्सु को एक क्या बोलते हैं आसान रिवाइवल तो मिल ही जाएगा। एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस फाइट देखने को मिलती हुई बिटवीन टीम X7 एंड टीम SG हर्म्स। ऑक्सीजन जहाँ पे डियो का एलिमिनेशन हो चुका है इन दिस 4th सर्कल। हमारा टीम्स अगेन यहाँ पे जो है एक पोजीशन पॉइंट्स निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर दिया जा रहा है। 7 स्पेरी हो, क्या नाम था 7 का प्लेयर, एक नॉक निकालते हुए अगेन 7 ही। दिस इज सेपॉय मिकी फ्रॉम टीम 7। एक बहुत ही ब्यूटीफुल गेम यहाँ पे जो है स्टार्ट हो चुका है। क्योटिक जो माहौल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। टीम गायरो का प्लेयर डेक्स्टर यहाँ पे आगे कोशिश करता है। डेक्स्टर एक नॉक निकालते हुए, बट उर्सुला को नॉक निकालते हुए टीम 7 का पे यही डर था। टीम
गायरो के लिए, क्योंकि 7 का प्लेयर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से गेट कीप में बैठा हुआ था। टीम एग्जिट का प्लेयर एक नॉक निकालते हुए, बट इन दिस एरिया क्या टीम गायरो का प्लेयर्स आगे भी निकल पाएगा, बट टीम द हू फेरियम की तरफ से एक नॉक आते हुए वन मोर टाइम क्या इस वाले मैच टीम द हू के फेवर में जा रहे हैं क्या पीपल। अब से पॉइंट मिकिनी नॉक पे नॉक निकालते जा रहे हैं। टीम द हू के आगे भी बहुत सारे टीम्स मौजूद है, यानी कि रेड गेमिंग प्लेयर, टीम गायरो एंड टीम 7E एंड टीम द हू आर प्लेइंग फाइटिंग इन दिस रीजन। सर्कल्स ट्विंकिंग, हम देखते हैं टीम गायरो के लिए काफी मुश्किल होने वाला, जहां पे सर्कल का फेवर इनके ओवर में कतई नहीं है, जहां पे टीम द हू का प्लेयर काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक चोक पॉइंट्स में गेम अपना दर्शाते जा रहे हैं। बहुत सारे टीम्स पीछे पीएसएल का प्लेयर, आई थिंक द टीम्स आर नॉट गोइंग फॉर द हीलिंग बैटल। लिमिट हैव ओनली दिस 7-11 हेल्थ किट्स पीडी हूं यहाँ पे जो है एलिमिनेट यहाँ पे जो होने वाला है। टीम एग्जिट ने काफी अच्छी तरीके से अपने आप को लोकेट करके रखा हुआ है। टीम एग्जिट बोलने से स्प्रे गॉड निकालते हुए ब्यूटीफुल ओपनिंग पॉइंट्स फ्रॉम इन दिस एरिया। टीम द हू यहाँ पे जो है पूरा रेक्स पिकअप हो चुका है। टीम एग्जिट स्प्रे गॉड को निकालना पड़ेगा। अब पूरा ही फाइट यहाँ पे नाउ लेट्स सी पीपल क्या हो जाएगा। टॉप 12 टॉप 11 यानी कि 11 एंड 10 के लिए काफी ज्यादा फाइट्स करते जा रहे हैं प्लेयर्स एंड द टीम्स। टीम एग्जिट का अगर हम बात करें, बहुत सारे टीम्स है चिकन डिनर के लिए बहुत ही हंग्री है, एंड टीम द हू की तरफ से दैट थॉय निकालते हुए ब्यूटीफुल नॉक निकालना पड़ेगा। जोन के आगे 32 सो रेडी फॉर द हीलिंग बैटल आउट दिया। हीलिंग बैटल के आगे भी जाते हुए दैट थॉय ने एक फिनिशेस निकाल दिया। क्या ये हीलिंग बैटल कर पाएगा? ये सी कर रहा है। 31 health kits in the name for the team the who the that why team peace and lemon also going for the healing battle. Last 2 of health kits in the name. Puya Rex की तरफ से एक नॉक देखने को मिल रहा था, but he himself on the knees. Meanwhile multiple fights going on. Team exit इस वाले मैच में काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए हम देखते हुए in this very last of fight in the Sanhok map. We see the mind player also coming up with a beautiful gameplay. टोकिया मूविंग फॉरवर्ड सेज की तरफ से 7E से पॉइंट म्यू के यहाँ पे जो है पिकअप हो चुका है। रोटेशंस फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। सेज का प्लेयर्स शॉट्स पे शॉट देखने को मिल रहा था फ्रॉम टीम सेज एज वेल। बहुत ही ज्यादा इंटेंस जो ये बैटल यहाँ पे देखने को मिलते हुए बिटवीन प्ले जोन की तरफ से टीम द हू का डेथॉय एंड द रेक्स मैच से बाहर हो चुका है बाय प्ले जोन itself. Sage the only player now having the 4 wall and the roof compound in the name. We have the 7A AKOG is also going for the healing battle. Last 10 health kits in the name. We have the team X ZUCS, no dirty inside the circle. We have the team the who. So many teams, so many fights happening outside the circle. We see a team exit Melvin की तरफ से team mind के लिए fight करते हुए Sage against फाइट निकालने काफी कोशिश करता था। सोलो प्लेयर फ्रॉम द टीम द हू द रेड चाइल्ड माइंड प्लेयर की तरफ से एक शॉट्स भी देखने को मिलते हुए। वन मोर टाइम दिस इज पैनफॉर फॉर द टीम्स माइंड स्पॉट अगेंस्ट टीम BOROHARI spots. यहाँ पे सर्वाइव का क्या होगा, but he is managing to get that not the finishes but the damages in the name. Okay, team BOROHARI को आगे आने के लिए काफी मुश्किल। We see here the BOROHARI player one more time exit Melvin and the player. We see, let's go and check it out. The team BOROHARI player Griffin going for the healing battle. Last 9 health kills. So many players, so many teams going for the healing battle. People, we see here the match is about to end. Let's not spread the negativity. Also, the stream is not good sometimes. Team exit. I think they're now hunting for the chicken dinner. Also with the manpower, we see a top 11 with the 12 finishes. I mean 5 finishes at top 11. We see here still fighting for that team Patient Lemon being eliminated at top 11. We see here the team exit boss EX and the player now moving forward. Team exit the player Rage and the player now going crazy. Meanwhile the player has taken down the player from team 7E AKOGs as well. Sage James and the player. Now it is a competition between these 8 teams out here. We have the Sage James with a 4-man standing still. We have the Moats and the player with the 7 finishes in the name Ace. We have the player Frankie Moats. क्या है नाम? Ace. Where is Frankie? Frankie with the itself 3 solo finishes. Eliminate the exit player. Kill for the shots. Give and take situations. But the player Frankie, he is knocked on the knees by the player from team EX exit out there. काफी कोशिश किया था दोनों तरीके से यहाँ पे जो शॉट निकले स्प्रे गॉड इन द प्लेयर माइंड प्लेयर एथिक यहाँ पे जो है डाउन हो चुका है. Players and the teams are now fighting for the chicken dinner. Oh my god, in the paradise in this region we have now the 16th and the 11th player in the lobby. Exact player no dot T again without revealing the position. He managed to be at top 6. He is inside this compound. किसी को भी पता नहीं है यार. टीम द प्लेयर एक्स ZUCS नॉट डॉटी का क्या बोलते हैं लोकेशंस किसको भी पता नहीं है. ही हैवंट रिवील्ड हिज पोजीशन येट. ही इज नाउ हंटिंग फॉर दैट. ओके
Okay, so team exit player finally down with the top 5 teams. We have the team exit teams at top 5 with the 10 finishes out there with the 3 men standing. Boss and the player now going down. Let's see, X7 player finally revealed the position. He have no choice. We see here the grenades यहाँ पे देखने को मिलते हुए ई बॉस 7x के अपने ग्रेनेड्स के अपने किल्स निकाल पाएगा अपनी टीम्स के X7 नॉट डॉट क्या यहाँ पे अपने टीम्स के लिए कुछ कर पाएगा. हीलिंग बैटल के लिए भी बहुत ही सोचना पड़ेगा. एक्स डर्टी के पास में मात्र 4 हेल्थ किट से. वी सी हियर द GYRO wrecker OP for his selling battle only he managed to bring his team at top 5 with the last 2 health kits. He might be in the top 5 place. We see here कौन सा और भी एक प्लेयर से okay, from the only players also it is now a fight between team GYRO. The ZUCS eliminations top 5 में हो चुका है. We have the only players Magara with the last health kits. He managed to bring his team at top 2. That's going to be the end for the match, and the matches ended beautiful people, and the winner chicken dinner goes to the team exit, predicted already for their beautiful gameplay, beautiful comeback. Congratulations. Top 2 we have the only spots. 3 GYRO, 4 and the following up with. Okay, following 2 matches will be in the UD7 DD channel. Thank you so much for joining. From a place of hardship to a place of ease comes a place of flourish. In return, it's for a reason. That I couldn't say it. Yeah, I don't find time to debate if I deserve growth, or if maybe I should preserve coping by hating you, adoring you.
before, baby before, baby before, baby before. Find the time to start again, reason to admire my trials. I need to find myself in quiet before I can. Careful with your pretty eyes and run with me, yeah. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me with the skate girl tonight. Careful with your pretty eyes and run with me, yeah. Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me with the skate girl tonight. Can see is we're drifting
I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun.